Not enough. Okay. Um, Once again, we are here with another season of EPL 2023. Come on, cheer up! Woo! One man may be an important ingredient for the team, but one man cannot be a team. So each one of y'all came together, made a team. You all put your ingredients to that team, and y'all are standing here as a team to represent your team. So winning and losing, uh, that's secondary. Honoring, respecting, learning, and having the good memories from this tournament is very, very important. So you must be thinking that, after this EPL practice gets over, maybe match gets over, you will have that vacuum of, every time, oh, come and for practice, booking the court, going for practice. That makes the difference. Match is only for a half an hour. But, getting everybody, going for practice, having fun itself is a more enjoyable and giving lot of satisfaction, isn't it? Yes, you will miss it after the EPL match gets over. Okay, I would like to request each one of you, those who are standing and sitting outside also, please rise for national anthem. Please stand in attention. National anthem, please. Janaganamana Adina. Maratha, Dravida, Utkala, Vanga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Ujjala, Jaladi, Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Aage, Gahe Tava Jaya Gata, Janagana Mangaladayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Bharat Mata Ki Jai. Okay, so the last minute entry, uh, our um, our captain of the ship was not here since last evening, and physically he is there, mentally he will be here. So finally he made it physically and mentally. We would like to give a big thanking to Mr. Shankar for all the efforts he has put throughout these 2-3 months. Thank you so much. Over to you. Thanks for nice words. By saying, you know, uh, first time we saw, you know, the number of participants, the encouragement has been very high, and we saw more than 118 odd people enrolling, which has been the first time in our society. So thanks to all of you, first of all. Okay, without the participants, this tournament has no zeal or no power to say. Um, and the first one, I would like to thank the sponsors, the MSF. They for the second consecutive year they have sponsored. Without the sponsorship, the tournament can go on, but it won't be with the same scale as we have been having for the last year, and we are trying to replicate the same this year too. So thanks to them for supporting this residential box cricket tournament. Very nice of them. And before I move on to the players, again,
the owners, they make a big contribution for this tournament. Without the owners, all this auction, all this bidding, and all this nostalgia which we see, it will be just not there. It will be just a normal, ordinary tournament. So thanks to all the owners, Keyur Bhai, then Kailash, then Pankaj and Sanket. The first time they have become the owners. Hopefully you have a good time with us. Then we can see Mitesh Agarwal of Classy Riders, then our chairman Sunil Sigania and Ashok Bhai from Chargers, the Vivian Richards and the Clive Lloyd of our box cricket are here. Rahul Jha and Saurav. Vivek Sagar, who's always been one of the best bowlers in our tournament, along with again Nirav Gandhi, who's again the first time he's picked up this mantle of ownership. Thank you again, Nikhil. I mean, you don't have to ask him. He just says, okay, just put my name. So that's the way he has been supporting us. Thanks to Nikhil. Thank you for supporting us continuously. And finally, the players, you all have a good time. Let's play with the competitive spirit. Obviously, the most important thing is to have fun. I mean, it's a competitive in nature, but having fun is the most important thing. With that, I would hand it over to Sucharita. Okay, may I request all the organizing team to come over here? Organizing team. Ambrish, Sandeep. Vikas is not here, I guess. Vikas is here. Vikas, please come up. Mr. Sunil Singhania, Mr. Shankar, Sandeep, Shaili. Michael is not here. Shaili is not here. Mr. Bhavik is not here. Pavan Mundra is here. Pavan is not here. Bhavik is also not here. Yeah. Yeah, myself, yes. These are all the people, those who are working at the backdrop. We may not be seeing there in action, but yes, their ideas, their support, their inputs are more, it makes, this thing going on. Without this organizing team, it is little difficult. You all know how busy we are. Personal, family, professional commitments and taking time out and, giving your important timing really, worth giving your appreciation today. Thank you so much, each one of you all. It is our privilege to have this organizing committee. Thank you once again. So now I would like to come to the teams. So I would like to request your captain or the owners, whoever, give few words about whatever I'm asking. I may ask any weird questions. I don't know yet. Still thinking what to ask. All right, I have in front of me the team bounce. They are going to bounce. Woo! That's nice. All right, team bounce. How is the Josh, first of all? Josh is unexplainable. I think the guys practiced till 12 o'clock yesterday night. We were practice till 12. Yeah. Huh? How are you feeling? Excited? Very excited. I think we have got a good team and looking forward to play good cricket and competitive cricket and let everybody enjoy. We pray to God that there is no injury. Yeah, thank you. Yeah, that's good. Good spirit. No injuries. Yes. बाद में जाके काम भी करना है नहीं तो घर पे आने नहीं देंगे. All right. Next we have our selected they are selected players. Yes. You. Come on. Big round of applause for the selective 11.
by seeing this only 3 players, my question is, where are your players? That's the hidden thing. They are still practicing. So we have booked 7-8 turfs all around Mumbai, and we are practicing throughout the week. So that's why the attendance is only 3. Next year we can expect more sponsorship. They booked 7-8 turfs in Mumbai. Please make a note of this. Yeah. So, how is the preparation? I know it's. Preparation is very ordinary. So I think you're enjoying in all 6-7 turfs. Very good. Keep it up. Thank you so much. Moving on to the next team. Are you there? Mavericks! You! Large in number. I like that spirit, children. Keep it up. Never miss inaugural and closing ceremony of any sports event. You miss any party, birthday parties, but never miss sports inauguration and closing ceremony. That's the beauty of it. I am a little scared to ask question because this full force is here. Okay. What is the one thing you want to tell this entire fraternity of players? Enjoy, have fun, don't fight. Just enjoy. Super, super. That's what we are going to carry after this EPL tournament at the end of the tournament. Now I am going to approach Classy Riders. Woo! All right. Now I am going to talk to the person who is always sitting there passing some, funny comments. Let him speak right now. Yes, Adit. How is the Josh? Simple question. Hi, sir. It's a hey, yeah, very high. Very high. Very high. Very good. Keep it up. Very good. So, any strategy? Can't disclose here. Can't disclose. But anyway, all the best, Classy Riders. Thank you so much, Adit. Thank you so much. Okay, now I'm standing in front of Chargers. Woo! All right, Chargers are in large in number. Very good. Very good. Anyway, you have the first match, right? Yeah, I like that. So how is the preparation and what is your one word if you want to say for every player? Amazing. They are really good. They are really amazing and really good. I'm playing first time. I'm playing first time and it's really. Yeah, you have the big force. You are the youngest one, I guess. Yeah. Yes, very good. All the best to you. What's your name? Jalach. All the best to you. Yes. Now moving on to, oh my God, superstars. Woo! Okay, superstars. Stars, very good. Big stars. Like the name. Okay, any one of you. Come on, come on, come on. I like the full team is standing in, Rahul, Saurabh, Rahul, Saurabh. Rahul बहुत shy है, नहीं बात करेगा. जाने दो. Saurabh will talk. Saurabh. Saurabh. What is the one thing you want to carry from this tournament?
that everybody is eyeing on that. He's answered it. It's a trophy. One thing that we want to carry from the tournament. Champions trophy, by the way. All right, we have miniatures also. Let's see. Very good. Yes, they want to be the champions. Anyway, that's a good bit. Everybody wants to be a winner, but how you practice, that is also makes difference. And how you enjoy the practice, that is the best happiness ever we can get. Good luck to you all. All right, Australian color. Oof. Now I have in front of me Krishna Warriors. Woo! Woo, woo. All right, Krishna Warriors. Name itself says Warriors with full preparation. Sir, how is your preparation? महाभारत आपने देखी है, जो कृष्ण की प्रिपरेशन थी उसमें वही हमारी है, कृष्णा वॉरियर्स. तो एम आई राइट? मैं राइट में भी खड़ा हूँ तो मैं राइट ही होऊंगा. तो कृष्णा वॉरियर्स, और चाहे हम जीते या हारें, लेकिन कृष्ण की भूमिका हमारी रहेगी जो महाभारत में अब पता नहीं कितनों की वाट लगाई थी या क्या किया था, जितवाया था, हरवाया था, बट देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ कृष्ण, सो व्हिच विल बी देयर. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, टू शो आवर प्रेजेंस. वाह 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 वाह. Thank you. When Krishna is there, there has to be many strategies behind it. Okay. Thank you so much. Oh, now I am going to stand in front of the team Nike Warriors. Woo-hoo. All right, sir. Here Nikhil is with us. Nikhil, we have seen you year after year coming up, taking the ownership and making the team. I think winning and losing doesn't make any difference for you, but you are there in the battlefield. Nikhil, what is your say? Yeah, the pitch look good. Boys are playing well, and we are here to have fun. That's what matters. Thank you. Yes, that's it, Nikhil. Thank you so much. Congratulations, and thank you so much for sparing your time and giving your ideas. Now I'll be going to Mr. Sunil Singhania to address this gathering for this evening. Hi, good evening. I think everything has been said earlier also, and as Shankar said, I think the good thing is that so many people are participating. More importantly, there are so many new faces. And I think all this events basically help us make new friends. There are some very, very young guys in every team. I think they also get to interact. And the best thing is that everyone is saying we are here to have fun, but everyone wants to win the trophy. So ये सब झूठ बोल रहे हैं, fun के लिए खेल रहे हैं, सब जीतने के लिए खेल रहे हैं. But I am very sure that the next 3 weekends will be weekends which we all long for. We will all, rush to ensure that we are on time. And after these 3 weekends are over, I am very sure we'll all miss these 3 weekends. So with that, the tournament is open. Best wishes to all the team, and may the best team win. Thank you. All right. Can we have a big round of applause once again? Woo! Make some noise. No restrictions. Make some noise. Thank you so much for gathering. Now I would like to call the captain
With us today's match, we have commentator Mr. Nishad Kora. Thank you so much for coming here, and it's our privilege to have you here. And thank you so much. Can I request the captain of the today's first match? Captains, please come ahead. Superstars and Chargers. Let's have the toss, please. May I request Shankar? Yeah. Sunil Singhani to come ahead. Yes, a cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the Exquisite Premier League season number 4. Is it season 4? Season number 4. Yeah, there is a certain Josh out here. It's toss time. The flip of the coin has happened. And we'll have to redo it. An exciting start. Off to an unusual start. Yes, both the captains in all readiness. Mr. Shankar to flip the coin. Heads is the call, and it is. Yes, it is the heads. Chargers having won the toss. It was the heads call from him. Kunal, congratulations. This is the inaugural match. A nice toss to win. What's your decision? Why? And what's the kind of excitement in your camp? Excitement is good, and we are taking bowl first. So that's it. And yes, how are you feeling? And not much. Are you going full strength? Yes. The news from the center, Team Chargers having won the toss decided to bowl first. So it's going to be the opening duo of superstars to take first strike. Hello, sir. Amrish is with me. Amrish, if you had to win the toss, what would your call have been? We would have chosen to bat any which way. So we are happy. Yes, the toss is not going to be having any bearing on this first match. How's the sense of excitement? There's a certain buzz in the air in the whole society with this tournament starting from today. Everyone is super excited. So superstars are also super excited. Yes, wishing both the teams the very best, and may the best team win at the end of the day. Putting their best foot forward here, both the teams, Superstars and Team Chargers. Yes, once again, good evening, namaskar, namaste, adab, sat sri akal, vadakkam, kem cho. This is such a great setting out here. I'm sure that this event is a trailblazer of an event which will definitely redefine the way society cricket is played in the city of Mumbai. A big thank you to the senior management of the Exquisite Premier League for this wonderful organization. I'm sure this promises to redefine the boundaries as far as society cricket is concerned. This is just making use of the game of cricket to bond the society together. The Exquisite Society is one big family, and this is just one step forward, the right direction to make sure that we bond, gel, and really move forward as one big Exquisite family. Indeed, the trophy out here, it's the beautiful lady, and each and every captain in the team has their eyes on this beautiful lady. देखना है कि जीत का परचम किसके मत्थे लहराता है और 3 weekends रुकना होगा. Yes, definitely there is a certain buzz in the air as far as this wonderful event is concerned. The Exquisite Premier League, definitely an exquisite event, no doubt about it. This is going to be the inaugural day, a terrific game coming up. Team Superstars versus Team Chargers. Team Superstars ने इस मैच के टॉस को जीता है, गेंदबाजी का चयन किया है, आमंत्रित किया है टीम सुपरस्टार्स की सलामी जोड़ी को कि पहले इस विकेट का बतौर बल्लेबाज उपयोग करे. जैसे कि सभी कैप्टन्स ने बताया कि काफी दिनों से लगातार बड़ी शिद्दत से सभी टीम्स प्रैक्टिस कर रहे. I'm sure that it's time for them to convert their belief into achievement. It's time for their potential to be converted into a match-winning performance. This is the big night here. The edition
getting underway the EPL 2023. This is going to be a blockbuster event. There is no doubt about it. And yes, kudos to the senior management of Team EPL for having organized this wonderful event. Yes, this match is live on YouTube, and just look at the set of rules and regulations that have been really drawn. I have been commentating for quite some time all over India, and the kind of rules and regulation, that's a big long list, and that really is a testimony to the fact that the management of the EPL has really done their homework well. A lot of detailing and planning has really gone into the organization of this EPL 2023. So big congratulations to the organizers for really taking the right step forward in the right direction to make sure that the Exquisite society remains one big family. Cricket is only a media. What better than cricket to try and bond and gel this society together? Yes, so may I request both the captains to please submit their squad list at the start of the game. The toss is already done with. बहुत ही ज़रूरी है कि आप आपके 13 प्लेयर्स से 10 लोगों के नाम आपको सबमिट करने हैं, और मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप ज़्यादा वाकिफ हो. थोड़ा सा it will take me a couple of matches to go through the rules and regulations to be spot on. Except the water bottles, no other stuff can really be kept inside the court. So kindly make a note of it. Anushasan se khelna hoga. Yes, so we are one of the most leading societies in this part of Mumbai, and we really need to lead by example. Yes, in the next 5 minutes, both the umpires Manoj More and Prajwal Shetty, the two umpires for the inaugural game. Here's wishing the umpires the very best. Turf cricket or box cricket really needs some extra skills as an umpire. There is more pressure on the umpires, and as we all know, it's an absolutely thankless job. Here's wishing our umpiring panel the very best. And if we can get one extra player from both the camps to be stationed alongside us in the commentary box, that really will be just about perfect. One extra player from both the camps to be stationed in the comm box at all times. Yes, it's great to see a couple of friends already. Rahul Jha, we have been in touch over the last 3-4 years. It's great to have been meeting Rahul Jha here unexpectedly at this tournament. I'm sure that you guys must have really shared the YouTube live link.
Yeah, you got to share it with your family and friends. Alongside me in the scoring section, we've got Shiv Kumar and digital scoring Rahul and Yogesh, three accomplished scorers alongside me, and my fellow commentator अख्तर भाई का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. हर्षोल्लास का वातावरण, आशा आकांक्षा की महक लहराती हुई इस वक्त इस खूबसूरत कोर्ट में. ये इनॉग्रल मैच है. देयर विल बी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बिल्कुल खुलकर ये सभी प्लेयर्स अपनी नेचुरल गेम को दर्शाते हुए इस ईपीएल 2023 को एक अगले लेवल तक ले जाएंगे. Yes, a big thank you to our chairman, Mr. Singhania. A big thank you to Mr. Shankar. And a very special thank you to Shetty Madam for inviting me here. And looking at Josh and excitement, just have a feeling that this is going to be a blockbuster event. One of the very best. No doubt that this trailblazer of an event promises to redefine the way cricket in a upscale society is played. Once again, just to mention that this is only a medium, the game of cricket. This is just to make sure that the whole exquisite society bonds, gels, and moves forward together as one big family. That really is the motto. पहला कदम उठाओ ईमान से, पहला कदम उठाओ ईमान से, सपनों की क्या मजाल के पूरे ना हो. Yes, everybody is vying for that beautiful lady, the Champions Trophy. You'll have to, you know how difficult it is to woo a lady, and especially when she is a beautiful lady. देखना है कि मेहनत करनी होगी, जद्दोजहद करना होगा इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने के लिए. देखना है कि जीत का परचम किसके मथे लहराता है 3 हफ्तों के बाद. 15th, the grand finale of the EPL 2023. The grand finale is on the 14th of May. Yes, so looking at the detailing that has really gone into the organization of this event, that is fabulous. I'm short of words as to any society can really organize an event on this scale, of this magnitude. That really is a testimony to the fact that the senior management of EPL has really put in a lot of hard work. जो पर्दे की पीछे की पूरी दास्तान है, उस दास्तान को रचा है हमारे EPL के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, और शेट्टी मैडम ने सभी का परिचय आपके साथ कराया. Can we have the bowler's name? See, this is live on YouTube, so we really do not want to be shouting here. Yeah. It's going to be Kunal to bowl the first ball, and the man on strike, a good friend of mine, Rahul Jha. Kunal to Rahul. Lights, camera, action, showtime. Starts off with a cover drive. That was a full-length delivery. Off to an optimistic start here. Loads and loads of experience behind him. चट्टान जैसा अनुभव है राहुल के पास. Ayush, the left-handed batsman. Yes, a left and right hand combination is always a tough ask to bowl. थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और बहुत ही जल्दी उस गेंद की लंबाई को भापा, अच्छी पोजीशन में आए और करारा शॉट लगाया. एक्सक्विजिट चौका इस टूर्नामेंट का पहला आयुष के बल्ले से, और इसे स्नैप गेंदबाजी करते कहते हैं. अगर आप अंडर आर्म क्रिकेट या तो टर्फ क्रिकेट को फॉलो करते हो, दैट्स अ डिक्लेयर्ड सिंगल. Yes, wishing our umpiring panel the very best.
Very nicely bowled, a length delivery, asking questions of the opening batsman Ayush. This is wonderful bowling, bringing all his experience into play. Kunal, the old wily fox, bowling from the combox end. This time too wide. Hardly any room for error in this kind of a limited overs format. Playing it a little uppishly, but no harm done. The ball ricocheting off the boundary rope towards that mid-wicket region. And in comes Vicky now. As I've been known to Vicky for quite some time. It's great to just have meeting some good friends here after a long time. Scoreline at the end of the first over is 8 runs. The new bowler, Vicky. Vicky will be bowling to Ayush. अपने स्पेल का आगाज करते हुए विकी. विकास गुप्ता उर्फ विकी. A nicely driven Rahul Jha plays for the GSC. And what a terrific season he's had at the GSC. Alongside Vikram Panjwani, he's the owner of the team at GSC. Team challengers, Rahul Jha and Vikram Panjwani, the owners at GSC. Too wide. सटीक गेंदबाजी करनी होगी, न पितूली गेंदबाजी करनी होगी. इस तरह के बड़े चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने के लिए आपके पास चाह और राह दोनों का ही होना बिल्कुल जरूरी है. You got to have plan A and B in place. This is the big game. Through with this shot a little too early. गेंद थोड़ी सी रुक कर आती हुई. अच्छा शॉट और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग. अच्छी गेंदबाजी को अच्छे फील्डिंग की बैसाखी की जरूरत होगी. अगर इम्पैक्ट कराना है तो द फील्डर्स विल हैव टू रियली बी एट देयर वेरी बेस्ट. दे नीड टू फील्ड आउट ऑफ द स्किन्स. द स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ 2 overs इज 15 runs for the loss of no wickets. एक अच्छी नींव रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज. काफी क्रिकेट खेलना बाकी है. स्टिल अर्ली डेज. इस वक्त भविष्यवाणी करना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है. अमित सूद नए गेंदबाज. स्ट्राइक पर राहुल. इट इज ध्रुव बोराडे. अच्छी गेंद ऑन द राइस. कॉपी बुक स्टाइल में ड्राइव किया. That will really do his confidence a world of good, that carpet off drive. Off to a good steady start here, both the teams. We'll have to wait and watch as to what kind of a total will be enough on this court, on this wicket. This inaugural match is setting the tone for the EPL 2023. Quite short, we'll have to wait and watch. That's a no ball, so no harm done. He was quick to pick that no ball up. और एक नो गेंद. एक्स्ट्रास की सौगात देते हुए बोराडे. The scoreboard ticking in the form of singles at this stage. Till the time they really stop the boundaries, I'm sure that the captain of the fielding team will not mind the singles and couples being taken. Happy to play the waiting game.
इस इनिंग्स के शुरुआत में गेंदबाजी को बिल्कुल मेरिट पर ट्रीट करते हुए ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हुए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है मेरे साथी कमेंटेटर अख्तर भाई का। धन्यवाद सर। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है ईपीएल में। इसका आज हमने आरंभ देखा, ओपनिंग सेरेमनी देखी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई। पावर प्ले, अंपायर का इशारा आता हुआ पावर प्ले का। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन। सॉरी 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति है 22 रन। आयुष खेल रहे हैं 11 गेंदों में 12 रन बनाकर और राहुल खेल रहे हैं 9 गेंदों में 6 रन बनाकर। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस जरूरत है एक पत्थर तबीयत से उछालने की। जी हाँ, एक बेहतरीन इवेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक्स्ट्रा काफी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे, एक्स्ट्रा की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा। 24 रन टू 24 विदाउट लॉस इन 4th ओवर। दूधिया रोशनी में एक चमकदार क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ। एक सोसाइटी का इवेंट है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है। क्रिकेट एक खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है। खेल भावना के साथ इसे खेले। वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में फिर एक बार इजाफा। 27 रन। इस बार ऑन साइड में खेल करके 1 रन प्राप्त किया। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, दोनों बल्लेबाज काफ़ी संयम से खेल रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी। सुपर ओवर मैदान पर चलता हुआ। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ा सा साधारण क्रिकेट यहाँ पर फील्डिंग टीम की तरफ से, a little bit of sloppy cricket. The scoreboard moving in the form of singles. Off to a steady start here. Both the teams still early days. Quite some cricket left to be played in this one. The scoreline at the end of 4 overs is 31. The final 4 overs left to come. And it is Vikas Gupta now to bowl his final over. अब तक बड़े रनों की पाइपलाइन को काटा हुआ है। ये एक बहुत ही एनकरेजिंग बात है फील्डिंग टीम के लिए। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 40 रन। अभी भी 4 ओवर बचे हैं, तो देखना है बच्चे हुए 4 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और कितना स्कोर खड़ा करते हैं अपनी टीम के लिए। इस वक्त एक्सक्विजिट सोसाइटी के क्रिकेटिंग गलियारों में केवल एक ही चर्चा है और वो है ईपीएल 2023। ईपीएल 2023 एक शानदार आगाज हो चुका है। Yes, so this is off to a good start here and दूधिया रोशनी में ये मल्टीपर्पज कोर्ट और भी निखर कर नजर आता हुआ और काफी अच्छी तादाद में सभी दर्शकगण मौजूद है। We are seeing young, very young boys and girls. We are seeing a few lads here, and yes, youth is here. Middle-age group cricketers are here. The senior citizens are here. तो कुल मिला के पूरा एक्सक्विजिट परिवार इस ईपीएल 2023 की शुरुआत का लुत्फ उठाते हुए। जी हाँ, ईपीएल में आए हुए सभी दर्शकों का, सभी मान्यवरों का, सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ, एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर देने की कोशिश जारी है चार्जर्स की और अच्छा शुरुआत, अच्छी एक नींव रखी है, अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिल रही है। पांचवा ओवर लेकर अशोक फुल टॉस बना करके खेला ऑफ साइड में, बढ़िया शॉट और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। केवल 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। 42-42 बाएं हाथ के बल्लेबाज, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, सम्मानजनक रूप देते हुए खेला, कोई रन नहीं। लेग स्टंप पर अंदर आती हुई गेंद
ऑन साइड में खेल करके 1 रन प्राप्त किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल खराब गेंदों का लाभ उठाने की कोशिश यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज द्वारा, और चार्जर्स इस वक्त फुल चार्ज में नजर आते हुए। 43। Yes, Ayush and Rahul looking to break the shackles here. It's time to up the ante. It's time to put the foot on the pedal. Here we go. Just what the doctor ordered. This is the first exquisite sixer of the tournament coming off the blade of Rahul Jha. Just what the doctor ordered. That will really take his confidence skyrocketing. Yes, it's indeed a time to put the foot on the pedal. It's time for acceleration. अब तक केवल फुल जड़ी देखी थी, आतिशबाजी देखना बाकी है। Zabardast catch. Just look at the way he really plucked that ball out of thin air. On his way back to the pavilion, जिस पहली विकेट की खोज में थी टीम चार्जर्स, उस पहली विकेट को प्राप्त किया है। आनंद ने एक अच्छा कैच लिया राहुल झा पेविलियन का रुख करते हुए। अख्तर भाई क्या कहेंगे? जी हाँ, जिसकी तलाश थी, काफ़ी देर से कोशिश जारी थी, लेकिन राहुल ने बहुत ही बढ़िया उम्दा कैच यहाँ पर लपका और एक पहले विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देते हुए राहुल अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर रहे थे चार्जर्स, और एक बेहतरीन सिक्सर भी लगा था। उसके बाद ये विकेट गिरना थोड़ा सा उनके लिए देखना है किस तरह से इस विकेट के बाद संभलने की कोशिश करते और कितने रन बटोरते अपनी टीम के लिए। .44 एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। बैटर नेम प्लीज। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को हल्के से केवल दिशा दी, पॉइंट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। बैटर नेम प्लीज। शुभम। In comes Shubham at the crucial number 3 spot. शुभम अपनी टीम की तरकश में वो विक्रमादित्य तीर है जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है। बस जरूरी है कि बिल्कुल खुलकर खेले, अपना आक्रामक रंग पेश करे। इस तरह के टर्फ क्रिकेट में लिमिटेड ओवर्स में बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में खेलना होता है और शुभम की फितरत में ही आक्रामक खेलना। देखना है कि किस तरह से अपनी टीम की इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हैं। अच्छी गेंद। And yes, he gets his man. The second batsman bites the dust here. Just a little too over the fence, and he'll have to take that sorry walk back to the pavilion without having trouble the scorers. This man is back in the hut. Yes, 2 quick wickets have fallen, and now it's time for some orthodox cricket to be played. It's time for a partnership to be forged. It's time for some resurrection here. They need to make sure that the batting team that they do not lose any further wickets at this stage. ये अच्छा वापसी की है, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर सुपरस्टार्स ने। 2 विकेट प्राप्त किए। टॉस बना करके खेला ऑन साइड में। 1 रन केवल। अच्छी फील्डिंग यहां पर। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का। निश्चित रूप से काफी खराब गेंद थी। इस बार फुल टॉस बना करके खेला है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्लेबाज की बैट से टकरा करके ऑफ साइड में आई है। 1 रन। बेहतरीन कैच, बहुत ही उम्दा। कवर पर खड़े खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच लपका और लगातार ये 3रा विकेट यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अमरीश पेविलियन का रुख कर चुके हैं कप्तान अमरीश।
इस वक्त they have their back up against the wall here. The scoreline is 38. It is 38 runs at this stage. 6 overs, 38. And Ayush, who really came in as the opening batsman, the onus will be on Ayush to take his team to a respectability on the board. And to do so, they lead something in the region of at least 60 runs. The final 12 balls to come. Ayush, the man on strike. Looking to break the shackles here. Trying to add some important runs towards the end of this innings. इस वक्त स्थिति काफी अनुकूल है फील्डिंग टीम के लिए. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर इस मैच में बने रहना होगा बैटिंग टीम ने. They'll be looking to put up at least 60 plus on the board. Down the leg side, quite the right call. One extra run takes the scoreline to I have been requesting one extra player to be stationed in the comm box. That's a missed opportunity. Cat chuta, dil roota, sapna toota. We need one extra player from both the cams in the comm box. We are going live on YouTube. 1 minute, 1 minute. See, we are going live on YouTube. We do not want to be screaming. Hitesh, the new man. Extra रनों की सौगात देते हुए welcome runs, but this really could be a difference between a victory and defeat here. You got to be spot on with your bowling. Nicely played. We'll have to wait and watch the ball ricocheting off the side wall. That is 3 runs in the declared zone. This time into the boundary ropes. Important runs being added here. Just what the doctor ordered. अब वाकई में कहना होगा कि इस मैच में एक छोटी सी वापसी की है बैटिंग टीम ने. रन संख्या है 54. फुल टॉस बना करके खेलने का प्रयास है. ऑन साइड में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज हितेश. फुल टॉस बना करके खेला ऑन साइड में. 1 रन दौड़ करके पूरा किया. अच्छी गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद. खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा. फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. अच्छी गेंदबाजी इस बार बल्लेबाज को अपनी गेंदों पर नचाने में कामयाब होते हुए. 56. अगली गेंद इस ओवर की लेग स्टंप से बाहर. वाइट का इशारा. 57. अच्छी गेंद. आखिरी गेंद इस ओवर की. लास्ट बॉल टू गो.
बढ़िया शॉट यहाँ पर ऑफ साइड में, और 2 रन दौड़ करके पूरे किए। जी नहीं, 1 ही रन। दूसरे रन की कोशिश जरूर कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन रन आउट हो चुके हैं। आठ ओवर यहाँ पर समाप्ति, और 8 ओवर की समाप्ति पर 53 रन हुए हैं। 54 रनों का लक्ष्य है, 54 रन टू विन। चार्जर्स के लिए जो लक्ष्य रखा गया है 54 रनों का है, 54 रन टू विन इन 8 ओवर्स। ओवर टू कोरा सर। कैमरामैन, हेलो कैमरामैन। यस, हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर अशोक, जो कि टीम चार्जर्स की एक अहम कड़ी है। 54 रन्स टू विन द मैच। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत में काफ़ी मानते रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन इनिंग्स जब एंड हो रही थी कुछ एक्स्ट्रा रनों की सौगात दी। क्या कहेंगे, किस तरह का चांस है इस मैच को जीतने के लिए? हमारी चार्जर्स टीम के अंदर वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन बैटिंग साइड, especially with openings, and I hope 54 is a very small target for us, and all the players are very well charged, and I hope कि हम लोग 6-7 ओवर के पहले ही इसे पूरा बना लेंगे सर। ये राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट है, लेकिन ज़रूरी है कि उस पहले मैच को जीते और वो पहले 2 अंक हासिल करे, ताकि एक अच्छी शुरुआत हो। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है 3 हफ्तों का, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? It's a small ground as well as थोड़ा पेशेंस का गेम है, एंड यंगस्टर टीम लोगों की है, एंड आई 100% श्योर माई ऑल द प्लेयर्स ऑफ चार्जर्स दे विल वेल प्लेड, और हम लोग आज भी जीतेंगे और जीतते रहेंगे। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माई चार्जर्स, एंड दैट्स ऑल। Thank you, and here's wishing both the teams the very best. The second half about to get started in the next minute or so. 54 runs to win the match is the set target. सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बनाए हैं और 54 रनों का लक्ष्य रखा है। 54 रन टू विन चार्जर्स। तो देखना है जब चार्जर्स बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो कितने चार्ज नजर आते हैं। चलिए, अब 53 रन बन चुके और इस मैच को जीतने के लिए 54 रन बनाने होंगे। No cricket match is over till you knock off those winning runs or you take that last wicket. This is a game of glorious uncertainties. अनिश्चितताओं का खेल है। Nobody will dare to predict the outcome of a cricket game in this kind of a stage. Anything can happen. Still early days. Yes, not a mountain to climb here. इतना भी बड़ा विशाल स्कोर नहीं चेस करना है, इस बात में कोई संदेह नहीं. But the runs are on board and they'll have to play some good cricket to get there. There is no doubt about it. कुछ हद तक पलड़ा भारी है सुपरस्टार्स का, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन शुरुआत के 2 ओवर्स में अगर शिकंजा कस ले यहाँ पर टीम चार्जर्स तो एनीथिंग कैन हैपन. द मैच विल बी ऑन देन. देखना है कि किस तरह से शुरुआत करते अपने इस साधारण से लक्ष्य को डिफेंड करने में टीम चार्जर्स. इस मैच के टॉस को जीता था टीम चार्जर्स ने और गेंदबाजी का चयन किया था. अब ऐसा आलम है कि इस मैच को जीतने के लिए 54 रन्स बनाने होंगे. फिर से एक बार तहे दिल से EPL 2023 की जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनको 21 तोपों की सलामी बनती है इस तरह के खूबसूरत आयोजन के लिए.
शायद ही मुंबई शहर में कोई अपस्केल सोसाइटी इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता होगा इतने बड़े स्केल पर। जी हाँ, एक बेहतरीन आयोजन देखने के लिए मिल रहा है और आयोजन कमेटी का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये आयोजन किया है। एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को सजाया गया है और आप देख रहे हैं दूधिया रोशनी में ये क्रिकेट के मुकाबले बेहतरीन तौर पर शुरुआत है। यहाँ पर पहला मुकाबला चल रहा है। 54 रन बने, 53 रन बने हैं, 54 रनों की का लक्ष्य है। दोनों ही टीमें मैदान पर फिर एक बार खेलने के लिए तैयार। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। प्ले टाइम। Anand to bowl. Anand on strike, and it's going to be Saurav to bowl to give company to the batsman. It is Jalaj at the non-striking end. Here we go. 54 runs to win. Starts off with a good leg spinning delivery. Anywhere a leg spinner is always a good sight to watch. Off to a good start here, bowling in the business area. अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ प्रश्न चिन्ह पूछते हुए। If any batsman plays 3 consecutive dot balls, then he's out. Okay, क्या बात है? So just getting that single in the nick of time, off the mark here. The left-handed batsman now. Jalaj on strike. एक यंग प्लेयर है, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज। काफी कुछ निर्भर है कि किस तरह से जलज अपनी इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करता है। नो गेंद, इस बात की खबरदारी का इख्तियार करना होगा। अंपायर का इशारा, नो बॉल। इस बीच डेड बॉल का इशारा। 3 runs for the loss of no wickets. लो फुल टॉस, करारा शॉट लगाया, 6 रन्स मिले। रन संख्या इस एक्सक्विजिट छक्के के साथ जा पहुंचती है 9 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत, उम्दा शुरुआत। चल, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन बेल्स वहीं पर रुकी हुई है। जलज वाकई में हुनर का पौधा है और आने वाले दिनों में ये हुनर का पौधा क्रिकेट का एक वटवृक्ष बनेगा। गेंदबाजी में उतरे हैं अब कश्यप। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है 9। अच्छी शुरुआत, 9 रन 54 रनों का लक्ष्य 8 ओवर में, और दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कोशिश करते हुए अपनी जानिब से कि अपनी टीम को यहां पर विजय दौर तक ले जाएं। देखना है आने वाले गेंद का किस तरह से सामना करते हैं, किस तरह से मुकाबला करते हैं। बाएं हाथ के नए उभरते हुए बल्लेबाज जलज। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग की शुरुआत इस ओवर की। डॉट बॉल, अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, मगर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। कश्यप की इस गेंद को खेला और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग, यहां पर कोई रन नहीं लगा था। दूसरी गेंद डॉट। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, यहां पर तीसरी गेंद डॉट और कश्यप को सफलता मिलती हुई। उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर, बांधने में सक्षम रहे बल्लेबाज को और बल्लेबाज जलास आउट होते हुए। सब पहला
तो 5 रन हो रहे हैं और पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ जलास का। अच्छी कामयाबी, एक अच्छी सफलता, एक बड़ा विकेट मिला। जी, नए बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। न्यू बैटर नेम प्लीज। प्रसाद। तो देखना है प्रसाद मैदान पर आ रहे हैं, किस तरह से प्रसाद अपने साथी खिलाड़ी का साथ देते हैं और किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है और दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन। बेहतरीन शुरुआत यहां पर देखने के लिए मिली कश्यप द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, तैयार फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए। 3 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष। छोर बदलते हुए राइट आर्म अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर फिर एक बार खतरा हो सकता है, रनआउट का मौका था लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो आता हुआ और अपने आप को वापसी में सेव करते हुए बल्लेबाज आनंद। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग और रन की जो संभावना था उसको समाप्त करते हुए सुपरस्टार्स काफी अच्छे स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत जरूर अच्छी की थी पहले ओवर में, लेकिन यहां पर कश्यप ने अपनी गेंदबाजी से, अपनी गेंदबाजी के जादू से बांधे रखा है बल्लेबाजों को और कोई खास मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को खुलकर खेलने का। अच्छी गेंदबाजी, दोनों ही तरह की गेंदबाजी यहां पर देखने के लिए मिल रही है। एक अनुभवी गेंदबाज और अपना अनुभव शेयर करते हुए। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, छेड़ने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने लेकिन असफल रहे। बाकी काम विकेट कीपर ने किया, हल्की सी अपील जरूर की गई, अंपायर ने नकारा। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। आखिरी गेंद इस ओवर की और इसे ऑफसाइड में खेला, दौड़ करके 1 रन प्राप्त किया। इसी के साथ ये दूसरा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर की समाप्ति हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Yeah, the scoreline at the end of 2 overs is 6 runs for the loss of 1 wicket. यानी कि अब आने वाली 36 गेंदों में कुल मिला के 48 रन्स बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 48 runs to win the match of 36 balls. It is absolutely heartening to see that the fielding team is taking the fight to the enemy camp. The captain Amrish now bringing himself into the attack. The man on strike, Prasad. Left arm round the wicket. A very steady bowler. He's got loads and loads of experience behind him. One of the key bowlers definitely for the fielding team, and he'll have to be at the top of his game here tonight if his team has to win this match. He'll have to be at his very best. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर इस मैच में बने रहना होगा, आखिरी क्षणों तक फाइट करते रहना होगा। His team Chargers will be looking to take this match deep down. Very well bowled. This time altering his line. इसके पहले की गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, ये वाली गेंद काफी ऊपर की तरफ कराई थी। दो लगातार डॉट गेंद, अब रन लेना ही होगा। चले अब पेविलियन का रुख करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अमरीश अपने गेंदबाजी के जलवे बिखेरते हुए बड़े रनों की पाइपलाइन को वाकई में काटा हुआ है। चले रन संख्या केवल 2 रन,
2 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब 52 रनों की और दरकार है। चलिए अब बिल्कुल इस वक्त बॉलिंग टीम का जुनून सर चढ़कर बोलता हुआ यह मैच का पासा पलटा है। The fortunes have really swayed from the batting team in favor of the fielding team now. Did Newman Dhruv? They are holding the batters to a tight leash. No freebies on offer. They are making the batters toil for each and every run. And that is the way it really should be. A very good start to the defense of 53 runs here, Team Chargers. Definitely all charged up. एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ टीम चार्जर्स ने, और वाकई में बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए एक बहुत ही मंजा हुआ ओवर इस वक्त करते हुए टीम के कप्तान अमरीश काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की। अमरीश की इस ओवर की समाप्ति और रन संख्या है 3 ओवर के बाद केवल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब आने वाली 30 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 51 रन बनाने होंगे। अख्तर 51 टू विन ऑफ 30 बॉल्स। जी हाँ, सुपरस्टार्स इस वक्त सुपर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर करते हुए केवल 4 रन 3 ओवर की समाप्ति और 2 विकेटों के नुकसान पर 4 रन। इस बार गेंदबाजी के लिए शुभम गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर लेकर अपनी टीम की जानिब से। देखना है शुभम इस अंकुश पे और एक अंकुश लगा पाते या नहीं। बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट आर्म ऑन द विकेट गेंदबाजी करते हुए शुभम। यहां पर नो बॉल, अंपायर का इशारा। 1+1 2 रन की बदौलत स्कोरिंग में हल्का सा इजाफा 6 रनों का हो चुके हैं। ध्रुव तैयार, सामना करेंगे शुभम की आने वाली गेंद का। टॉस बना करके खेला, बढ़िया शॉट है ऑफ साइड में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। केवल 1 रन, दूसरे रन की किसी भी 7 रन 2 विकेट नुकसान पर। सुपरस्टार्स काफी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अपनी जानिब से और अपनी टीम को विजय की ओर ले जाते हुए। ऑफ साइड में खेला है 1 रन के लिए और 1 ही रन अमरीश है फील्डर। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचा 8 पर। ध्रुव फिर एक बार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। इस बार ऑन साइड में खेला, अच्छी फील्डिंग, फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन अमरीश द्वारा। गेंदबाजी में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और फील्डिंग में भी अपना मुजाहिरा करते हुए बेहतरीन। प्रसाद, अच्छी गेंद प्रसाद के लिए, ये पूरी तरह से एक कदम आगे बढ़ करके खेलने का प्रयास किया था। गेंद उनके पैड से टकराई, हल्की सी अपील जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। और गेंद आखिरी क्षणों तक गेंद पर नजरें जमाई रखी, केवल दिशा दी पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद 1 रन के लिए 2 अंकों में 10 पर पहुंचा स्कोर। काफी लंबा सफर तय करना है यहाँ पर। बाल बचे हैं बल्लेबाज, खेलना चाहते थे 1 कदम आगे बढ़ करके, लेकिन दिस इज टेरिफिक बॉलिंग बाय दिस मैन हियर। नो रन रन नहीं है ये। The batsman beaten all ends up lock, stock and barrel. He's got this uncanny ability to move the ball both ways. That's the timeout. And alongside me here to my right, one of the chief organizers, Mr. Shankar, is doing a swell job with that spreadsheet. That spreadsheet will give you all the details, all the dynamics will be covered in that spreadsheet.
So that is indeed a wonderful job done here. He's quite passionate about his work here, Mr. Shankar. The score is 10. 10 runs at the end of 4 overs, 10 for 2. तो अब इस मैच को जीतने के लिए 44 रन्स बनाने होंगे 4 ओवर्स में. Yes, there is a DRS and you get 2 opportunities to review the call. Only 2 opportunities. Yes, अपना आक्रामक रंग पेश करना होगा टीम सुपरस्टार्स ने. सुपरस्टार्स ने इस मैच के टॉस को जीता, गेंदबाजी का चयन किया और इस वक्त they are looking down the barrel of the gun. They are in dire straits. They have their back up against the wall here, team superstars. Yes, so off to a good start here, the Exquisite Premier League 2023. This is edition number 4. And this year the event has been organized on a bigger and a better scale. It cannot really get bigger and better than this. There is a certain buzz in the air. The only thing that is really talked about in the corridors of the Exquisite Oberoi Society is the EPL 2023. EPL 2023 का नशा सर चढ़कर बोलता हुआ. बहुत ही बढ़िया माहौल है, अच्छा समा बंधा हुआ है. दूधिया रोशनी में ये मल्टीपर्पज कोर्ट और भी निखर कर आता हुआ. The stage is all set for the players to step forward and really play some scintillating and entertaining cricket. Yes, a big thank you to Mrs. Shetty for inviting me to be a part of this wonderful event. Yes, it's great to see that an upscale society is indeed organizing such a mammoth event. And yes, nice to meet up with Akhtar Bhai, our Hindi commentator. Over to Mr. Akhtar. थैंक यू सर, धन्यवाद. एक जी हाँ बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग देखने के लिए मिल रहा है और इस दूधिया रोस्ट में चमकदार क्रिकेट मैदान पर अंडर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ. 10 रन स्कोर है, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बचे हुए 4 ओवर में अभी भी मंजिल काफ़ी दूर. लेकिन देखना है कि किनारे पर बैठे रहने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो देखना कितनी कोशिश यहाँ पर करते हैं चैलेंजर्स के बल्लेबाज, जबकि सुपरस्टार्स इस पर पकड़ बना है वे इस मुकाबले में. अमरीश फिर एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए. सामना करेंगे बल्लेबाज प्रसाद. दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि थोड़ी सी आक्रामकता बल्ले से दिखाएं और कुछ रनों की बौछार यहां पर करें ताकि उनकी टीम के जो कप्तान हैं उनकी उम्मीदें बरकरार रहे. इस बार ऑन साइड में खेला, हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, और 1 रन प्राप्त किया. 11. अमरीश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. अच्छी गेंद, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक यहां पर लगाया ऑन साइड में. मिड डाउन की दिशा में गेंद गई है 1 रन के लिए. अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर सुपरस्टार्स की जानिब से देखने के लिए मिल रहा है. इस बार बढ़िया शॉट है, देखना ये गेंद सीधे हाथों में. 2 रन. 2 रन डिक्लेयर. चूंकि उन्होंने कैच लपका जरूर, लेकिन वो जाली से जाकर के टकराए, जिसके कारण 2 रन डिक्लेयर हैं. तो इन 2 रन की बदौलत स्कोर 12. जी आपके हाथ में गेंद जरूर है, लेकिन आपने जो वॉल है उसको टच किया, जिसके कारण 2 रन डिक्लेयर. 14-14. दो विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद अमरीश की, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अमरीश अपनी जानिब से. खराब गेंद, इलेक्शन से बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का. इस बार बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही
फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, और उसको जब प्रतिसाद मिलता है फील्डिंग का तो मनोबल बढ़ता हुआ गेंदबाज का। नो बॉल, अंपायर का इशारा, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर। 15 फ्री हिट। वाइड बॉल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अमरीश की गेंद, हालांकि फ्री हिट है और फ्री हिट का देखना कितना लाभ उठाते हैं यहाँ पर। 1 रन, जिन्हें गेंद डेड है जिसके कारण केवल 1 ही रन जो नो बॉल का है वो मिलेगा। वाइड बॉल का 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, मंजिल काफी दूर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अमरीश की, बांधने में सक्षम बल्लेबाजों को। इस बार यहां पर कैच हो सकता था, फुल टॉस बनाकर कवर के क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। बेहतरीन, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और इसी के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति, 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। सर Yes, 18 balls to go and 37 runs to win the match. 18 गेंदों में 37 रनों की दरकार. Your guess is as good as mine. Shubham all set to bowl. लूज गेंद और सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए. बहुत ही अच्छा कैच लिया सौरभ ने. One more man bites the dust here. It's starting to get very difficult here. Mountain to climb. Definitely in the driver's seat at this stage is team Superstars. The new man in Kunal Karnik. The job is cut out for Kunal. Kunal will have to be at his explosive best. He'll have to play the innings of his life here if he has to take his team past the victory post. शिकंजा कसा है इस मैच पर, काफी तगड़ा कब्जा जमाए हुए है इस वक्त फील्डिंग टीम यानी कि सुपरस्टार्स. कर्णिक नए बल्लेबाज. अच्छी टाइमिंग थी लेकिन गेंदबाज के पैरों को वो गेंद लगी. बैक इन प्ले, केवल 1 ही रन का इजाफा. The cat is out of the bag. 2 dot balls. Yeah, this man has really bowled brilliantly alongside his captain. These 2 bowlers have been the showstoppers for the fielding team, the 2 standout bowlers. Nicely done, good timing. Yes, to the credit of Team Superstars, you got to confess that Team Superstars has indeed played like a cohesive unit. They are playing like a team. They are gelling so well. Each and every player has been assigned a role, and everybody is performing that role to a nicety. They are scripting a fantastic victory out here, but still some cricket left to be played in this one. Still could go either ways. Brilliant bowling. उनकी गेंदबाजी के स्टाइल से, एक्शन से ऐसा लगता है कि टप्पा खाकर गेंद बाहर की तरफ निकलेगी, चकमा देते हुए गेंद अंदर की तरफ आती हुई. बहुत ही सटीक गेंदबाजी. शिकंजा कसा है यहाँ पर इस गेंदबाज ने. काफी अनुकूल स्थिति में टीम सुपरस्टार्स, दूसरी तरफ काफी प्रतिकूल स्थिति में है टीम चार्जर्स. 17 for 3 at the end of 6 overs. 12 balls and 37 runs to win the match, and this is the signal of the super over. ये आखिरी उम्मीद की किरण अब टीम चार्जर्स के लिए उभर कर आती हुई. अगर इस मैच में जीत के उस पार जाना है तो किसी भी हाल में इस सुपर ओवर का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करना होगा. और इस सुपर ओवर में आंखों देखा हाल लेकर मेरे साथी कमेंटेटर अख्तर. धन्यवाद सर. जी हाँ, सुपर ओवर जितना लाभ उठा सकते हैं, यही एक मौका है इन्हें उनके पास.
और एकदम सही निर्णय सुपर ओवर लेने का। देखना इस सुपर ओवर में कितने रन बटोरते हैं अपनी टीम के लिए। 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी क्षण तक और आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन दिया है सुपरस्टार्स ने, लेकिन चैलेंजर्स और सुपरस्टार्स, देखना है कौन सी टीम यहाँ पर विजय होती है और अपने पहले 2 पॉइंट्स कलेक्ट करती है। लीग फॉर्मेट मुकाबले यहाँ पर चलते हुए EPL एक खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग मिलता हुआ। टॉस बना करके खेला है और 1 रन प्राप्त किया। 1+1। अगली गेंद सुपर ओवर ऑन साइड में खेला। फिर एक बार 1 रन। अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली और सदी हुई गेंदबाजी अब तक सभी चैलेंज इस सुपरस्टार्स के गेंदबाजों ने की है और कोई खास मौका नहीं दिया है चैलेंजर्स को। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बैकफुट पर जान पर मजबूर किया बल्लेबाज को, धीरे से कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में खेला। 1 रन के लिए 1+1। 9 गेंदों में अभी भी 31 रनों की जरूरत। 3 गेंदें इस ओवर की बची है। अच्छा शॉट है ऑन साइड में, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील्डिंग सजाई है और सभी खिलाड़ी जी जान के साथ खेलते हुए। 1+1। इस मुकाबले को अगर जीत हासिल करनी है तो चौके और छक्के लगाने होंगे, मगर आखिरी गेंद इस ओवर की है। अब 7 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। मुश्किल लक्ष्य और मुश्किल होता हुआ नजर आता हुआ। और ऑन साइड में 1 रन के लिए केवल, और इसी के साथ ये 2 रन आते हुए यहाँ पर डिक्लेयर जोन में। 2+2 4। तो इस तरह से ये ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। सुपर ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी देखने के लिए मिली। 2+2 है, 2+2। और आखिरी ओवर अब बचता है, 6 गेंदें बचती हैं। सर क्या कहेंगे आप आखिरी 6 गेंदों में? आखिरी 6 गेंदों में अब रन्स बनाने होंगे। 23 रन्स, 23 रन्स टू विन दिस मैच। Your guess is as good as mine. They have their back up against the wall. 6 balls and 23 runs to win the match. 23 रन्स आखिरी 6 गेंदों में। सुपर ओवर का फायदा नहीं उठा पाए। वो आखिरी उम्मीद की किरण थी। अब दिस इज नाउ माउंट एवरेस्ट टू क्लाइम। Up and over she goes, and he'll have to take that sorry walk back to the pavilion. One more man bites the dust here. Amit Sood, the new man in. 5 balls and 23 runs to win the match. -5, is it okay? So 28 to win now. Amit, can we give them a new ball? पांच गेंदों में रन्स बनाने 28, यानी कि अब केवल औपचारिकता है बाकी। यस, थोड़ा सा नेट रन रेट की तरफ ध्यान देना होगा बैटिंग टीम ने। 7 मैचेस टू प्ले, 6 more round robin league matches to play after this. तो नेट रन रेट पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यानी कि ऑल आउट नहीं होना है, अपने कोटा को खेलना है। अब इस मैच को जीतने से तो रही बैटिंग टीम। They should make sure that they really play out those 8 overs. Amit on his way back to the pavilion. 33 more to win now. 33 रनों की जरूरत है। बिल्कुल हावी है इस मैच में। अपने
सटीक गेंदबाजी और बहुत ही उम्दा क्षेत्र रक्षण के जलवे बिखेरे हैं टीम सुपरस्टार्स ने. दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ विक्ट्री. एक बड़ी जीत के दरवाजे पर जोरों से दस्तक देती हुई सुपरस्टार्स. विकास गुप्ता नए बल्लेबाज. They are a very good team, no doubt about it, Team Chargers. But yes, the first match, it's not been such a good day in office. Yes, they have drawn first blood here, Team Superstars. The first points on the board. Off to a good start here, off to a winning start here, Team Superstars. This is going to be a longest journey. Each team gets to play 7 round robin league matches. Very well bowled. They have really bowled so clinically. They have been absolutely brilliant. 2 dot balls. Nicely done. Well played. Into the declared zone. That's the end. Congratulations to Team Superstars for winning this inaugural match of the Exquisite Premier League 2023. जी हाँ, जीत के साथ शुरुआत थी यहाँ पर सुपर स्टार्स का धमाका. Yes, so we will try and talk to both the captains. सुपरस्टार वर्सेस चैलेंजर पहला मुकाबला 53 रनों का लक्ष्य था और केवल 24 रन यहां पर बनाए गए हैं चैलेंजर्स द्वारा, जबकि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था कप्तान ने, लेकिन गेंदबाजी में और बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्र में यहां पर मात खानी पड़ी और इस प्रकार से पहले इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा चार्जर्स को और सुपरस्टार्स ने इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत लिया है. अब हम मैदान की ओर बढ़ते हैं. मैदान पर हमारे साथी कमेंटेटर कोरा सर बहुत ही बेहतरीन उम्दा अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण करने के बाद एक बुलंद आवाज. कोरा सर इस वक्त मैदान पर है. ओवर टू कोरा सर. Cameraman, are you ready? Yes, I have with me alongside one of the key players for team Superstars, that is Rahul Jha. Rahul, definitely आप एक अहम कड़ी हो. छोटा सा लक्ष्य लेकिन बड़े स्टाइल में आपने इस लक्ष्य को डिफेंड किया. एक लंबा सफर होने वाला है. This is going to be a longest tournament. You're going to be playing 7 round robin league matches, 6 more to go. It's great to get those first points on the board, isn't it? Yes, sir. I think it's very pivotal that we got the 2 points on the board because in the lead up to the tournament, there were quite a few practice matches that we played and we didn't end up winning much of those matches. So it's very important that we start off on the right note, and 2 points on the board is something that the momentum can be carried on for the future tournaments. Yes, some food for thought as far as the batting is concerned. Your bowling was absolutely spot on, but the batters will really have to be more flourishing. Yes, sir. I think we got off to a decent start. We were around 40 in 4 overs. So it was very important that me and Ayush, we carried on and take the score to anything north of 70. But we ended up with just 54. So I think the batsmen need to realize, including myself, that the 48 balls that need to be played without losing much wickets. So I think we need to show more applications in the next matches. But very proud with the first win and the way we fought back with the ball. Thank you, and yes, wishing you the very best. I have with me Vikas Gupta here. Definitely he would have wanted to end up on the winning note, लेकिन कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है और 6 matches खेलना है. You'll have to pull up your socks, try and make a comeback. You all are a bunch of good cricketers. But yes, the job is cut out for you now. See, I would say is that we would need to apply more into batting. I think we did well bowling, restricting them after they were scored 4 over for 40 runs. So from there, restricting them to 54 was a good job, but the job never got fulfilled in terms of batting. I think that
we would apply more ourselves out there. Yes, definitely the star players, the frontline players in your team, the all-rounders, they'll have to really be at their very best if your team has to make a comeback and try and make those qualifiers and eliminators. Try to put up a better fight next time. Thank you and wishing your team the very best. And now it's toss time. May I request the captains of Krishna Warriors and Mavericks to please step up for the toss. Yes, we are in all readiness. चलिए दोनों ही कप्तानों से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए जल्द से जल्द पहुंचे. ये अगला मैच कृष्णा वॉरियर्स बनाम मैवरिक्स. Yes, the two captains alongside me, the captain of Mavericks, Vikas, and the captain of Krishna Warriors, Vinayak. Who's going to call? It's going to be which team? Krishna Warriors to take the call, the flip of the coin. It is tails. So yes, Mavericks, Vikas, you won the toss. What's your decision? Why? You've seen the earlier match. They won the toss but could not win the match. So what's your call? So we are going to bat first. We are very confident that we can put up some good score and ask them to restrict in the second bowling. So yes, how's the preparation be and how keyed up and geared up are you for this wonderful event, the EPL 2023? So I think everyone is charged up. Everyone is coming for the practice sessions every day. Surprisingly, everyone is coming and giving their best. So hope to see a very good match. Yes, the news from the center is that Mavericks have won the toss and they've decided to bat first. A positive decision. I have with me Vinayak, the captain of Krishna Warriors. Vinayak, if you had to win the toss, so what would your take have been? We would have selected to bat first because we have a very strong bowling lineup. We can defend any score. That's what the confidence we had. But still, we'll try our best to chase and give a tough fight. And we are sure that we'll win this match also. Yes, this is season number 4 and this year the event is organized on a very grand scale. तो क्या कहेंगे इस event के बारे में for the organizing team? Yeah, this is just the start. It's nice to play the second game. Looking forward towards the grand tournament over the next 3 weekends. And how are your frontline players shaping up, the key players in your camp? Yeah, so we have been practicing very hard, but we have got like real good players who have been carrying, who are keeping the ability to bat the innings, bat throughout the innings. And we have got some wonderful bowlers in like Vivek and Vineet and all. They are the real key bowlers who can turn the game around with the bowling at any given moment. Yes, the news from the center is team Mavericks have won the toss. A positive decision first up. They're opting to bat first. So it's going to be the opening duo of Krishna Warriors as a bowling unit to bowl first. Yes, wishing both the teams the very best. Two very good teams up against each other. This is match number 2. The first round robin league match for both the teams in this EPL 2023. A big thank you to the nice crowd that has usually gathered on the sidelines. And it's great to see this crowd watching the match through a lens of sportsman spirit. Thank you so much. Akhtar bhai. थैंक यू सर. एक मैवरिक्स के कैप्टन प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें. तो दूसरे मुकाबले का टॉस हो चुका है और दोनों ही टीमें मैदान पर इस वक्त अभ्यास करती हुई नजर आ रही है. जी हाँ, प्लीज अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू करें. दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं. दोनों ही टीमों के अगर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कॉम बॉक्स में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके खिलाड़ियों के नाम हम तक पहुंचेंगे और उतना अच्छा विश्लेषण हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोनों ही टीमों के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजें. मैवरिक्स के प्लीज़ एक खिलाड़ी आ जाएं.
मैवरिक्स के एक खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में आ जाए। Mavericks, having won the toss, have decided to bat first. As the captain mentioned that they are a good bowling unit and they will be looking to defend any total on the board. It's a good positive decision. Quite some cricket left to be played. This is match number 2. A total of 32 matches to be played in the CPL 2023, including the qualifiers, the eliminator and the grand finale. A total of 32 matches. We are not counting the trial matches, the practice matches that you guys played. This is match number 2. So including this match, 31 matches to be played over the next 3 weekends. एक लंबा सफर तय करना यहाँ पर खिलाड़ियों को और देखना उसके लिए जो तैयारी उन्होंने की है उसमें कितनी सफलता उन्हें मिलती है। इस वक्त मैदान पर जो दो टीमें हैं दोनों ही टीमों के लिए हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स टू दिस मैच। सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का, सभी मान्यवर का फिर एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है ईपीएल 2023 में। खेल शुरू हो चुका है। फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेहतरीन अंदाज में खेला। बल्ले का फ्लो काफी खूबसूरत तरीके से देखने के लिए मिला। 1 रन से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला 1 रन से। इस बार ऑन साइड में बढ़िया शॉट। प्रणव ने भी अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 2 रनों पर। स्ट्राइक पर प्रसाद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी अंदर की ओर आती हुई गेंद थी। बिल्कुल एक कदम आगे आकर गेंद की लाइन में आकर के खेलने का प्रयास। विनीत काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक इस ओवर में अच्छी शुरुआत विनीत द्वारा देखने के लिए मिल रही है। 3 रन बिना किसी नुकसान के। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद को ऑन साइड में ऑन ड्राइव किया है। मिड डाउन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 4 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर मैदान पर। इस बार कैच की आवाज यहां पर जरूर आई लेकिन काफी दूर थे खिलाड़ी। 1 बाउंस गेंद को कलेक्ट करने में सफलता प्राप्त की यहां पर राघव ने। अच्छी फील्डिंग। 1 रन इस भी दौड़ करके पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 5 रन। 8-8 ओवर का मुकाबला है। दूसरा मुकाबला आज के इस टूर्नामेंट का ईपीएल सीजन 23। लेग स्टंप से अंदर आती हुई गेंद फ्लिक किया। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई 1 रन के लिए। अच्छी गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का। लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर बीट करती हुई बल्लेबाज को अंपायर ने इसे वाइट करार दिया। फिर एक बार गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार ऑन साइड में करारा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन गेंद
ज्यादा दूर जा नहीं पाई। इस प्रकार से 1 रन फिर एक बार खाते में आता हुआ बल्लेबाजों के। इस 1 रन की बदौलत स्कोर 8 पर पहुंचा। 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर मैदान पर विवेक द्वारा। आगे बढ़कर ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छी फील्डिंग। फिर एक बार गौरव राघव द्वारा केवल 1 रन। और दूसरे ओवर में 4 गेंदें हो चुकी हैं। इस बार सीधे सीधे राघव के हाथ में। राघव ने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से पहली सफलता, पहला विकेट गिरता हुआ। लॉन्ग ऑन पर खड़े थे राघव, अच्छी फील्डिंग करते जब से, लेकिन इस बार सीधे उनके हाथों में गेंद और आसान सा कैच उन्होंने लपका और इस प्रकार से पहला विकेट गिरता हुआ। कृष्णा वॉरियर्स काफी अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी। अगली गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी ये। लेग ब्रेक गेंद थी पूरी तरह से नए आए हुए बल्लेबाज के लिए, एक सरप्राइज गेंद। शोहम के लिए। और इसी के साथ ही ओवर समाप्त हुआ दूसरा। 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर है केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर कृष्णा वॉरियर्स की जानिब से देखने के लिए मिल रही है। और जब उनके कप्तान से बात की गई थी ओपनिंग सेरेमनी में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास कृष्णा की शक्ति है। और जी हाँ, उसी को यहाँ पर दर्शाते हुए हम कृष्णा की रणनीति अपनाएंगे और उसी रणनीति के साथ में यहाँ पर तीसरे ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राघव। पहली गेंद ऑफ ड्राइव किया गया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। अच्छी फील्डिंग है वहां पर। दूसरे रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा, 5 रन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी। बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। ऑन साइड में खेला जरूर, लेकिन आदित्य की अच्छी फील्डिंग वहां पर। रन की कोई संभावना नहीं। डॉट बॉल। लगातार 2 गेंदें डॉट और लगातार 3 गेंदें अगर यहाँ पर डॉट होती है तो विकेट की संभावना होती है। बल्लेबाज आउट करार माना जाता है। तो देखना है इस गेंद का मुकाबला किस तरह से करते हैं। राघव काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी जानिब से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे राघव। शुभम ने इस बार खेला है ऑफ ड्राइव करने की प्रयास था, बिल्कुल बल्ले के निचले किनारे पर गेंद मिड ऑफ पर गेंद को फिर रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया और टीम के स्कोर को पहुंचाया 6 रनों पर। इस बार ऑप्शन से अंदर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर के खेला बल्लेबाज प्रसाद ने। 7 रन। सोहम तैयार। उल्टास बनाकर खेलना, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि ये कैच हो सकता था लेकिन तेज शॉट था, थोड़ा सा मुश्किल। इस बार ऑफ साइड में अच्छा शॉट। सिंगल्स और डबल्स की कोशिश यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की सेट होने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 1 विकेट बहुत जल्दी गिर चुका है। 8 रन। चौथा ओवर शुरू होने की तैयारी में। 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 8 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी शुरुआत यहां पर देखने के लिए मिली। ऑर्गेनाइजिंग सेरेमनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली। ओपनिंग सेरेमनी माफ़ कीजिएगा, देखने के लिए बहुत बेहतरीन नज़ारा था। सभी टीमें एकत्रित यहाँ पर हुई थी और सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान के साथ इस टूर्नामेंट का आरंभ किया। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई। एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग देखने के लिए मिला और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इवेंट को मैनेज किया है। EPL 2023 सीजन 4 यहाँ पर चलता हुआ एक
अच्छा इवेंट देखने के लिए मिल रहा है दूधिया रोशनी में। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के मुकाबले चलते हुए दूसरा मैच। फुल टॉस बना करके ऑन साइड में खेल लिया है। राघव यहाँ पर फील्डर है, उन्होंने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की। 2 रन। इस तरह से 11 रन 2 अंकों में 11 पर पहुंचा स्कोर। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर मैदान पर है। 3 गेंद हो चुकी है, 3 रन अभी भी बाकी। प्रसाद सामना करेंगे आने वाली गेंद का। इस बार ऑन साइड में 2 रन। फिर एक बार ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में खेला। 2 रन के लिए 13 रन 13। गगन की अगली गेंद इस ओवर की प्रसाद के लिए। प्रसाद प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को ले जाया जाए। गगन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सक्षम है। अब तक बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, ठीक से खेलने का मौका नहीं दिया है दोनों ही बल्लेबाजों को। सोहम ऑफ साइड में खेला। नो बॉल, अंपायर का इशारा। 1+1। 2 रन यहां पर टोटल्स में ऐड होते। फिर एक बार नो बॉल का इशारा था अंपायर की जानिब से। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्ट स्कोर अगर हम देखते हैं तो 35। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी। मिडल स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप की ओर तेजी से जाती हुई गेंद। फ्री हिट है, प्रसाद को रुकना है। फ्री हिट है, फ्री हिट। तो विकेट नहीं गिरा। काफी अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। डॉट बॉल। चौथा ओवर यहां पर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 17 लॉस ऑफ 1। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। टाइम आउट। 4 ओवर, आधी मंजिल यहां पर तय हो चुकी है। आधी मंजिल अभी भी तय करना बाकी है। देखना है बचे हुए 4 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ईपीएल हम देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा इवेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट देखने के लिए मिल रहा है मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस इवेंट का मैनेजमेंट यहाँ पर किया है। सभी टीमों को एकत्रित करके सोसाइटी की एक जो इवेंट है, सोसाइटी के लोगों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसे बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बहुत ही सहज तरीके से किया गया है। एक काफ़ी अच्छी गैदरिंग देखने के लिए मिल रही है। सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सभी अपना खेल, अपना हुनर यहाँ पर दिखाने के लिए तैयार है, बेकार है। अभी दूसरा मुकाबला चल रहा है। बाकी की टीमें भी थोड़ी ही समय में यहाँ पर ऑन एक्शन नजर आएंगी। एक अच्छे मुकाबले देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आइए आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर कोरा सर से सुनते हैं। Thank you. Yes, having won the toss, Mavericks opted to bat first. They are 17 for 1 at the end of 4 overs. And they will be looking to now put the foot on the pedal here. Off to a good start here. He's bowling those back of the hand deliveries. Playing it slightly uppishly on the rise. No harm done. Just a single added. Takes the scoreline to 18. Prasad, the man on strike. A man at wideish mid-off, stationed in that key position. Just a single added. That's a no ball, a shot off the center line. So 2 runs added. There is yet one more no ball. That's a batsman no. Okay. That's a batsman no.
because he stepped out a little too early even before the ball could be delivered. -1. You cannot step out before the bowler accomplishes his bowling action. A lot of tailor-made rules and regulations. And yes, just to be aware of the rules, we have Mr. Shankar here. From the look of things, I have a feeling that this tournament will belong to the bowlers more than the batters. One ball to go. The score at the end of 5 overs is 23. 23 runs for the loss of 1 wicket. The scoreline reads 22. 22 runs for the loss of 1 wicket. 22. Yes, a tough ask for the umpires, the scorers. Turf cricket is very challenging. The underarm cricket, it's a fast game and so many tailor-made rules and regulations. Just to be aware of each and every regulation to perfection, that is quite an ask. Vinith to bowl. That is Prasad on strike. That was a flighted delivery. That was in his range. Trying to play an extravagant shot, missing the line completely. No addition to the total, which remains stationary on 22. We are into the penultimate match of the evening. One more to go after this. That's a no ball. Short of the center line. Beating the batsman in the flight here. Bringing all his experience into play, Vinith. Just trying to keep things simple. Not complicating the things in his mind. Just sticking to his basics. Yes, the key here is to keep things simple. Do not overthink in your mind. Keep things simple. विनीत अपनी सीमितताओं को भली भांति जानता है और उसी अनुसार अपनी गेम को एक अच्छे ढांचे में सजाता है, संवारता है और सट्टी गेंदबाजी करता है. Just keeping the ball in that business area and letting the wicket do the rest. Yes, so far the event has really belonged to the bowlers. Not easy to hit the big runs. Anything in the region of 60 is going to be winnable. Quite some cricket left to be played in this game. It is 25. That should have been really hit down the ground. A missed opportunity there. उस लूज गेंद को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए. 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर. White ball.
27. 28. A flurry of wide deliveries. Anything down the leg side, even an inch down the leg side, will invariably be called a wide one. This time with his off spinner. We'll have to wait and watch. That has been referred into the box here. For the first time it has been referred. We will play it frame by frame. The third umpire now getting into action. Yes, sir, we will play it frame by frame. We'll have to wait and watch. It's been referred into the third umpire's box. There you go. Just grounding his bat in the nick of time. Safely home. Not out. बिल्कुल महफूज सुरक्षित अपने घर वापस. Just in the nick of time. You got to ground your bat. You cannot get your bat in. You cannot dig your bat in. You got to take it dragging into the crease. That's a timeout. Retired is retired, okay. Retired out. The scoreline is 29 for 1 at the end of 6 overs. Over to Mr. Akhtar. थैंक यू सर. 6 ओवर समाप्त. 6 ओवर की समाप्ति और 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर. काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिल रही है हमें. अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन. कृष्णा वॉरियर्स की जानिब से बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और अच्छी गेंदबाजी. 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभाले हुए गेंदबाज विनायक. शोम फुल टॉस बना करके खेला है. ऑफ साइड में 1 रन लिया. आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने. विकास स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली गेंद. फुल टॉस बना करके खेला है. ऑफ साइड में फिर एक बार मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया. अच्छी फील्डिंग. इस बार अच्छी गेंद. अच्छा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा. स्वयं फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की. कोई रन नहीं. कुल मिलाकर के 31 रन 31 लॉस ऑफ 1 इन 7th ओवर. अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कृष्णा वॉरियर्स की जानिब से देखने के लिए मिल रहा है और बांधने में सक्षम नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को गेंदबाज. इस बार ऑफ स्टंप से अंदर की ओर आती हुई गेंद उसे कवर की क्षेत्र में और 1 रन प्राप्त किया. 32 फुल टॉस बना करके खेला. यहाँ पर फिर एक बार राघव के पास और राघव बेहतरीन फील्डर. आसान सा एक कैच लपका और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ विकास आउट होकर बॉलिंग में वापस जाते हुए. जो सिकंजा कसा था यहाँ पर गेंदबाज ने उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती हुई लगातार 2 गेंदें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खिलाई बल्लेबाज को और आखिरकार उन्हें बल्ला हवा में लहराना पड़ा जिसके चलते राघव यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े थे. उन्होंने आसान सा ये कैच लपका और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अभिनव ने बल्लेबाज आते ही प्रहार करने की कोशिश. ऑन साइड में खेला था. 1 रन अवश्य मिला. थोड़ा सा
फंबल हुआ यहाँ पर फील्डिंग में और 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 28 रन। 7 ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए और अब 8वां और आखिरी ओवर सुपर ओवर। देखना इस सुपर ओवर में कितने रन बटोरते यहाँ पर बल्लेबाज। 28 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी और अंतिम ओवर, लास्ट ओवर टू गो। आखिरी ओवर सुपर ओवर के रूप में यहाँ पर सुपर ओवर में जितने भी रन बनेंगे वो डबल होते हैं, तो देखना कितने रन बटोरने की कोशिश करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। विवेक की अगेन इसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, राघव है फील्डर, लेकिन 1 रन इस बीच आसानी के साथ दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1+1। स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ खेल दोनों ही सभी खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए। तीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थर्ड अंपायर की जानिब इशारा किया गया है रिव्यू के लिए। मैं अब रन आउट का जो अपील उन्होंने की थी, जिसके चलते यहां पर रिव्यू। थर्ड अंपायर्स मुआयना कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से जो थर्ड अंपायर का डिसीजन है वो है आउट, रन आउट। इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा लेजी यहाँ पर देखने के लिए मिले। जो खिलाड़ी थे उन्होंने बल्ला रखने में थोड़ी सी सुस्ती की और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा रन आउट के रूप में। आखिरी ओवर सुपर ओवर, सुपर ओवर में ये विकेट गिरता हुआ -5।
अभिनव रन आउट हुए हैं. न्यू बैटर इन 18 रन. फुल टॉस बना करके खेला ऑफ साइड में. 1 रन 1+1 20. अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, और ये गेंद आउट ऑफ बॉक्स गई है, लेकिन टप्पा खाने के बाद गई है, तो अंपायर का निर्णय जानने की कोशिश करेंगे. 1 रन है. जी हाँ, 1 रन 1+1. बाईस रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अगली गेंद इस ओवर की. विवेक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और नो डाउट कृष्णा वॉरियर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिया है. बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन, एक अच्छा मुजाहरा यहां पर उन्होंने किया अच्छे खेल का. इस बार लेग स्टंप से बहुत ही बेहतरीन गेंद थी. लेग पर एक गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज को हताश, निराश और विवश करती हुई गेंद. कोई रन नहीं है. जी हाँ, लेग बाय नहीं है इस टूर्नामेंट के नियम अनुसार. EPL 2023 सीजन 4. विवेक की अगली गेंद इस ओवर की. फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, और इसी के साथ ये 8 ओवर यहां पर समाप्त है. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, नपी तुली और सदी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए केवल यहां पर 24 रन बोर्ड पर नजर आ रहे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. 25 रनों का लक्ष्य है कृष्णा वॉरियर्स के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए. एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी उम्दा गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिला, और केवल 24 रन बने हैं. 25 रनों का लक्ष्य रखा गया है. देखना ये 25 रन किस तरह से बनाते हैं यहां पर कृष्णा वॉरियर्स के बल्लेबाज. और कृष्णा वॉरियर्स के बल्लेबाजों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आपको मैदान में दोबारा वापस आना है. और जैसे ही खेल शुरू होगा, आगे का आंखों देखा हाल हमारे वरिष्ठ एक बुलंद आवाज मुंबई परिसर की, कोरा सर. Yes, a smallish target to accomplish 25 to win the match. But as by the look of things, so far, this is really going to be belonging to the bowlers. So if they really play their moves to a nicety, this 25 can really start to look like 45. You got to bowl smartly. You got to marshal your resources the right way. You got to keep your thinking cap on at all times. Yes, so this is match number 2 of this robust, exquisite Premier League 2023. We are into season number 4, and this season has really been the best one as far as the scale and the magnitude of the event is concerned. Yes, there is a certain buzz in the air in the corridors of the Oberoi Exquisite Society as far as the EPL 2023 is concerned. We've got a good crowd here across all age groups. From small kids to the senior citizens, everybody's out here to watch the proceedings. Yes, quite a few pretty ladies out here watching the proceedings from the sidelines. And just look at the adjoining turf, all the kids are watching in anticipation. If you play your moves well, if you showcase your cards at the very right time, the sleeve, the card up your sleeve, if you showcase it at the right time, this 25 can start to look like 40 plus. A lot of penalties, a lot of negative runs. So you got to take advantage of all those dynamics. This is indeed a trailblazer of an event. This will redefine the way cricket in a upscale society is played. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट तो केवल एक माध्यम है,
कोशिश यही है कि इस क्रिकेट खेल के माध्यम से जो पूरा ओबरॉय एक्सक्विजिट परिवार है वो आपस में और एक बड़ा रिश्ता स्थापित करे और आगे बढ़े। Gaurav and Mangesh, the two opening batters for the batting team here. Krishna Warriors. Yes, not a mountain to climb. But yes, you'll have to be very immaculate in your run chase. You got to build the innings. अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री की अगर आप पन्ने पलटोगे तो ये बिल्कुल बात साबित होगी कि लो स्कोरिंग मैचेस में काफ़ी मर्तबा विपरीत रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग डेंजरस। ओपनिंग बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं कर सकते, ये एक मेन अहम रूल है, isn't it sir? Openers cannot bowl. Yes, as far as the fielding team is concerned, जो भी सलामी बल्लेबाज थे वो इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। Gaurav, that left-handed experienced man, Mr. Cricket on strike. To give him company, the non-strikers, and it is Mangesh. And to bowl, Sumit Jain. Lights, action, showtime. This can belong to the bowlers, this EPL 2023. Off to a good start here, a busy start, bowling in the business area. Quite some cricket left to be played. No need to press the panic button. It's a no ball. एक अच्छी शुरुआत, नपीतुली गेंदबाजी, वो गेंद काफी छोटी थी, बिल्कुल समय मिला बल्लेबाज को कि बैकफुट पर जाए और वाइडिश मिड ऑन की दिशा में खेले। द फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर हिम, straight to the man at that single saving position, extra cover region. One more no ball. You have to be right on the money. You're defending a smallish target. Good bit of work. Good bit of work. Saving 3 runs for the team. That is Soham. अच्छी गेंदबाजी को बिल्कुल सटीक क्षेत्र रक्षण की बैसाखी की जरूरत होगी। 100% एफर्ट लगाना होगा. They'll have to field out of the skin here. The scoreline at the end of the first over is 5 for the loss of no wickets. Just 20 runs required of 42 balls. Could have been a chance. That was a regulation catch. In the end, they decide to cross over for that single run. Never run on a misfield is what the wise men have been saying. But that was ample time for him to take that single. Down the leg. Easy runs being gifted. That is where you need to bowl consistently into that business area. Can still make a match out of this. You got to have that belief in your ability. वापसी का रास्ता खोजती हुई यहाँ पर Mavericks. मैच में बने रहना होगा. They'll have to keep picking wickets at regular intervals. Full toss. That was a loose delivery. 1 run added. Vikas bowling.
Just look at the cordon on the left side and the right side to the batsman. One more man behind the wicket keeper. Well bowled, very well bowled. Keeping things tighter. End of the second over. The scoreline reads 10 runs for the loss of no wickets. Just 15 more to win off 36 balls. Over to Akhtar. 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर की समाप्ति हुई, 2 अंकों में 10 रन बने हैं। अगर इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं तो नो डाउट कृष्णा वॉरियर्स यहां पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं और इसी धैर्य से और इसी संयम से खेलना होगा कृष्णा वॉरियर्स को। हालांकि मैवरिक्स के कैप्टन ने टॉस जीतने के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन टीम लड़खड़ाई और काफी कम स्कोर में केवल 24 रन यहां पर बोर्ड पर नजर आए उनकी जानिब से। 25 रनों का लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए कृष्णा वॉरियर्स बेहतरीन स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे अनिल गेंद का। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में फुल टॉस बना करके खेला और आसानी के साथ एक दौड़ करके पूरा किया। 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 12 रन। इस बार ऑफ ड्राइव बहुत ही खूबसूरत तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में गौरव और मंगेश की जोड़ी। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी। जब तक गेंद समझ पाते, गेंद चकमा दे चुकी थी बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, आगे बढ़ करके खेलने का प्रयास है। मिडल स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप की ओर निकलती हुई गेंद थी, चकमा देती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में, और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की, विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया और इस प्रकार से 1 विकेट यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ, पहली सफलता। पहला विकेट का पतन और रनों की संख्या 8 पर पहुंचती हुई -5। 31 गेंदों में अभी भी 17 रनों की जरूरत है। आसान लक्ष्य, मगर देखना है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जैसा कि कोरा सर ने कहा कि जितनी भी लो स्कोरिंग मैचेस होती है उसमें संघर्ष जरूर होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज राघव मैदान पर। राघव ने काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन दिया, 2 कैच लपके और अच्छी गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी का मौका उन्हें मिला है, देखना है नए उभरते हुए खिलाड़ी है, कितना लाभ उठाते हैं, इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का राघव, बाएं हाथ के बल्लेबाज। फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में खेला, 1 रन प्राप्त किया, खाता खुला। राघव ने अपना टीम के स्कोर को पहुंचाया 9 पर। 30 गेंदों में अभी भी 16 रनों की जरूरत है। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति और 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की समाप्ति पर 9 रन। और जब मैवरिक्स बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनकी पारी काफी लड़खड़ाई हुई नजर आ रही थी। राघव, बहुत मौका था यहां पर, एक आसान सा कैच प्रसाद द्वारा धरती को दान दे दिया गया और अब देखना ये कैच कितना मुश्किल साबित होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज राघव फुल टॉस बनाकर इस बार कवर के क्षेत्र में, बढ़िया शॉट है, 1 रन अवश्य मिलेगा राघव को। 10 रन धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। फुल टॉस फ्लाइटेड गेंद, इसका लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज ठीक से। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार ऑफ साइड में खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मंगेश ने और 1 रन प्राप्त किया अपनी टीम के लिए, 11 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज राघव फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आर्नल्ड गेंद का। फ्लाइटेड गेंद और इसे खेला ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन के लिए अच्छी फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ।
एक बार फ्लाइट हिट, बहुत ही अच्छी बिल्कुल ललचाती हुई गेंदे करते हुए। The scoreline at the end of 4 overs is 13 runs for the loss of 1 wicket. That has been referred into the third umpire's box for a declared couple. They're just checking, wanting to make sure. Yes, this man, Raghav, the left-handed batsman, definitely is one of the best batsmen that we've seen so far. He's playing with a positive intent. अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए वाकई में बैटिंग टीम के तरकश में राघव वो विक्रमादित्य तीर है जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है। युवा प्रतिभाशाली प्लेयर. Definitely this man will have to be taken care of by the fielding team if they have to try and win this one. A champion player. At the moment, they are definitely on cruise mode here in their chase of 25 runs to win this match. Yes, the fielding team will really have to gather that last ounce of fuel in their reserve tank to take the fight to the enemy camp. It's a single. है कि अभी भी ये मैच क्लोज हो सकता है. If you play your moves the right way, you can still make a match out of this. It all boils down to a scenario wherein it's a question of whether you've got that self-belief. अगर किसी भी वक्त मैच के किसी भी मोड पर अगर आपके जहन में किसी भी तरह से कोई शंका उपस्थित होती है तो फिर ये मैच आप जीतने से बिल्कुल रहे. अब ये ओवर अपने टीम के सर्वोत्तम गेंदबाज ने इस ओवर को करना होगा और एक गैम्बल भी कब लेते वो सुपर ओवर का ये देखना होगा. ऐसे थोड़ा सा गैम्बल करना होगा इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच में बने रहने के लिए. अभी भी एक नो 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 नॉट येट. $24 balls and 12 to win this one. पिछली खेला है लेकिन इंटेंशनल था. नो का इशारा. यानी कि 3 रन्स मिलेंगे 2+1. 3 महत्वपूर्ण रन्स खाते में जुड़ते हुए मंगेश बिल्कुल अब सही मायनों में अपनी टीम को जीत की नैया पर सवार कराते हुए एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. राघव ने मुझे काफी इंप्रेस किया है अब तक. अगर मैं कहूं कि कोई एक शानदार बल्लेबाज, बिल्कुल करेक्ट बल्लेबाज जो तकनीक पे भी तवज्जो देता है तो वो है राघव. और एक अलग किस्म का जुनून होता है जब आप एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को देखते हैं. 18 for 1, 19 for 1. Yes, going by the book here, not trying to manufacture shots that really aren't there, just treating the bowling on its merit. This is a good flourishing partnership, well and truly on their way towards a comfortable victory at the batting team, that is Krishna Warriors. The batsmen beaten all lines up, lock, stock and barrel. चारों खाने चीत किया बल्लेबाज को. बहुत ही बढ़िया गेंद. चले 3 रन्स मिले डिक्लेयर्ड जोन में. 3 रन्स. रन संख्या जा पहुंचती है 22 रनों पर. अब केवल और 3 रनों की दरकार, केवल 3 रनों की जरूरत. योर गेस इज एज गुड एज माइन. केवल औपचारिकता बाकी.
जीत के दरवाजे पर जोरों से दस्तक देती हुई, लेकिन पूरा आपको आपका पूरा सुनिश्चित कोटा खेलना है। यह भी एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प रूल है। थोड़ा सा अपिष्ट खेला है लेकिन कोई खतरा नहीं। डिक्लेयर्ड जोन में 2 रन मिले। काफी स्मार्ट शॉट, एफर्टलेसली बल्लेबाजी करते हुए मंगेश काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए, बहुत ही करेक्ट क्रिकेट खेलते हुए मंगेश बिल्कुल सेट हो चुके हैं और करीबन हर गेंद पर करारा जवाब पेश करते हुए मंगेश बहुत ही आला बल्लेबाजी की है। What a catch! Almost had it. What an effort! A 9 on 10 for that splendid effort. 2 runs into that declared zone, but yes, if we had to hold on to that ball like dear life, that would have been a fantabulous catch. Yes, but yes. What an effort by Mr. Jain. क्या बात है सर, बड़े एफर्ट। यही तो बात है, यही कोशिश, यही जोश, यही जज्बा, यही जुनून, यही तो देखना है। Age is only a number. We all are here to prove that, all the senior cricketers. It's all in the mind. That was straight into his chest and the ball was traveling like a tracer bullet. Just look at that. And the bowler ऐसा प्रतीत करते हुए कि ये कैच था, कैच क्यों छोड़ा? क्या डेयरिंग की है बॉलर ने, इस तरह की सोच भी अपने जहन में लाना। Yes, 2 of the best batters that we have seen so far. ये दोनों बल्लेबाजों पर सभी लोगों की निगाहें अब जमी हुई है। 2 standout batsmen, the 2 showstoppers for the batting team. जितने ज्यादा रन्स खाते में जोड़ेंगे उतना ही अपने नेट रन रेट के लिए और भी ज्यादा पुख्ता होगा। ये राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट है, एक लंबे अरसे तक ये टूर्नामेंट मार्गस्थ रहेगा। ऐसे हालात में नेट रन रेट पर भी नजर रखना बिल्कुल बनता है। क्या कहेंगे अख्तर भाई? जी हाँ, जिसके कारण आपकी स्थिति मजबूत होगी यहाँ पर। अगर आप जितने ज़्यादा रन बनाएंगे, जितना ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे, उतना आपका रन रेट मजबूत होगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। वही यहाँ पर नज़ारा एक, क्योंकि 8 ओवर आपको कंप्लीट यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है और इस वक्त हम अगर देखते हैं तो स्कोर पर नज़र मार दें 29। 6 ओवर की समाप्ति है और 6 ओवर की समाप्ति पर केवल 7 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही बल्लेबाजों की जो जोड़ी है, उन्होंने अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैविन्स की कमर तोड़ी है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ साइड में खेला, फुल टॉस बना करके 1 रन के लिए मंगेश ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी मंगेश और राघव द्वारा। इस बार ऑन साइड में, ऑन ड्राइव, खूबसूरत तरीके से, केवल 1 रन। Yes, you got to say that Krishna Warriors is much better prepared mentally into the game. They've already won the match, but as per the rule and regulation, you got to bat out their full quota. बढ़िया शॉट, ऑन साइड में 1 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही संयम के साथ और धैर्य के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक कोई गलती दोनों ही बल्लेबाजों ने नहीं की है और अब ये आखिरी ओवर है। 7 ओवर की समाप्ति पर 33 रन और अब सुपर ओवर, 8वां ओवर, सुपर ओवर 33। 7 ओवर की समाप्ति पर
33 रन 33। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे और बाएं हाथ के बल्लेबाज राघव स्ट्राइक पर, विकी गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ऑफ साइड में खेला, 1 रन प्राप्त किया, 1+1 35 35। रन, कोशिश जारी अभी भी। मंगेश तैयार, सामना करेंगे। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर गिरने के बाद अंदर आती हुई। मंगेश ने पूरी नजरें मंगेश की गेंद पर जमी हुई है, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट बैट्समैन है। इस बार ऑफ ऑन साइड में नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ 1+1। उसे चुनौती दी है गेंदबाज ने और थर्ड अंपायर के लिए नो बॉल, नो बॉल हाइट। अंपायर हाइट से नो बॉल है ना? हाँ हाइट, वेस्ट हाइट। जी हाँ, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। तो देखना कोशिश जारी है, कौन सी टीम यहाँ पर विजयी होती है। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए। थोड़ी देर के लिए खेल रुकता हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक नो बॉल का Yes, once again, a good evening and welcome to the EPL 2023. This is season number 4. A nice and a large crowd is starting to gather here on the sidelines. Yeah, the tempo starting to build. This is only the day number 1, match number 2. A total of 32 matches to be played, including the qualifiers, the eliminator, the grand finale. The next match, Nike Warriors versus Bounce. I'll request both the camps to be ready for the toss. The final match of the evening. रिव्यू यहाँ पर सक्सेसफुल नजर आ रहा है कि अंपायर नो बॉल नहीं है ये, बट जी हाँ वेस्ट से नीचे गेंद लगी है, सो सक्सेसफुल रिव्यू। तो केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा। हाँ 2 रन, सुपर ओवर चल रहा है मैदान पर, 2 रन जरूर मिलेंगे। 1 रन निकाला है ना दौड़ करके, 1+1। गौरव तैयार, सामना करेंगे विकी की आने वाली गेंदों का। एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल सटीक, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी है। और ये यहां पर प्रसाद ने गौरव का विकेट लिया, -5, -10। अभी कितना हुआ स्कोर? अभी कितना हुआ? हाँ नहीं मैंने 27 रन 27, यानी अभी भी आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद है और अभी भी संघर्ष चलता हुआ। 27 रन हो चुके, 25 रनों का लक्ष्य था इस मुकाबले को जीतने के लिए। 25 ना, ये 25 हुए थे ना। Just look at the beauty of the game. Just look at what it has all boiled down to. And if they lose a wicket, they are a goner. So yes. आखिरी गेंद है अभी इस ओवर की, और आखिरी गेंद पर देखना क्या होता है। 27 रन हो चुके हैं, अभी भी श्री कृष्णा वॉरियर्स जो है विजयी। और नए बल्लेबाज भी स्ट्राइक पर होगा, रोमांच बरकरार। This is a prime time drama. The TRP is going out of the roof.
What a cricket match. एक आखिरी उम्मीद की किरण, वापसी की महक लहराती हुई इस कोर्ट पर. You never know. They need a wicket. ये केवल एक मूल मंत्र है कि विकेट लेनी होगी किसी भी हाल में इस मैच को जीतने के लिए. जी हाँ, अगर विकेट गिरती है तो -10 होते हैं और मैरविन्स यहाँ पर विजयी हो सकते हैं. मित्र बन चुकी है टीम कृष्णा वॉरियर्स, but getting home just by the scruff of the neck. They were just holding on to dear life, and in the end they hold their nerve to go past the winning post. चलिए, हमारे साथ कप्तान विकास बने हुए हैं. विकास, आपने कोशिश की लेकिन at the end of the day that was too small a target to defend, but the fact that you took the fight to the enemy camp till the very last ball is a testimony to the fact that you all are not going to surrender. You all are a good team. Yeah, definitely. Everyone showed give their 100%. We missed 2 or 3 catches. I think we would have done that. Probably we would have won this match. And we were short of 5 runs. The target was small, but the bowlers were very good and showed a consistent performance. Yes, so far, if I may predict so, this is going to be a tournament which will really be low scoring, and this will belong to the bowlers. If you play your cards well, if you make use of the rules and regulations smartly, something like 25 can start to look like a 45. Definitely. We have seen many a times where... Yeah, definitely. Our entire goal was basically just to play out the innings, because I think our bowlers did a really good job with keeping the score low. So after, when you're chasing like a low 20s, mid 20s score, I think the key is just making sure you stay through the innings, which I think we did a good job doing. The last 2 balls were a little like hard, pumping, but I guess this is what, box cricket is about. So that was pretty fun. Yes, you nicely played that sheet anchor role to perfection, and somebody in this kind of a chase has to really stay positive, stay at the wicket, and make sure that you do not have any hiccup on your way and you take your team past the winning post. Yeah, 100%. Again, like I said, when you're chasing a low score, that's really what you want to do. You don't want to go for the big shots. You just want to get the singles, the doubles, and make sure, you stay there, stay at the crease. Thank you. Congratulations to Krishna Warriors. They're off to a winning note. They cannot be complacent. It's the longest journey. And yes, it's time for the toss. May I request Nike Warriors and Bounce to please report for the toss, both the captains. Yes, it's toss time. I've got both the captains in all readiness. To my left, it is Abhishek from Bounce, and to my right is Nike Warriors captain Aditya. It's going to be Abhishek to take the call first. Heads is the call from him, and we'll have to wait and watch. It is tails, and इस मैच के टॉस को जीता है Aditya ne, Nike Warriors. What's your decision? Why? Yes. How's your team shaping up for this first match? This is going to be a long tournament, 7 round robin league matches. So how's the excitement and how's the preparation? Good. All set. Let's go. Man of few words is man of action. Yes, he's won the toss, Nike Warriors, and decided to bowl first. I have with me
Abhishek, if you had to win the toss, what would your decision have been? Because we were prepared for the batting itself, and luckily Adi has given us the opportunity to score the runs. So let's see how it goes now. You've seen two matches. Both the first matches were quite low scoring, so the bowlers will have that. Yeah, this is the final match of the evening. Match number 3, a total of 32 matches to be played. We are going live on YouTube with this event. This is season number 4, and this is the most grandest tournament that we've had. So yes, each and every year the event is starting to become bigger and better with every passing year. अगला मुकाबला शुरू होने की तैयारी में है, बाउंस वर्सेस नाइट वॉरियर्स। दोनों ही टीमों के कैप्टन से प्लीज निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे कॉम बॉक्स की तरफ आ जाएं। दोनों ही टीमों के कैप्टन, बोथ द कैप्टन प्लीज कम हियर इन कॉम बॉक्स। दोनों कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में यहां पर आए, प्लीज इस तरफ से आ जाइए, अंदर से आइए, नो प्रॉब्लम। ईपीएल एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग देखने के लिए मिला आज यहाँ पर। इसका ओपनिंग सेरेमनी राष्ट्रीय गान के साथ किया गया और सभी सोसाइटी मेंबर्स, सभी सोसाइटी के खिलाड़ी और सभी दर्शक यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल आतिशी के साथ इस टूर्नामेंट का आरंभ किया गया, आगाज किया गया, ओपनिंग सेरेमनी किया गया और अब तीसरा मुकाबला शुरू होने की तैयारी में है। दोनों ही टीमें अभ्यास करते हुए इस वक्त मैदान पर। एफ द्वारा इस टीम की स्पॉन्सरशिप ली गई है और ईपीएल सीजन 4 2003 इस मैदान पर, इस टर्फ के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दूधिया रोशनी में एक चमकदार क्रिकेट का प्रदर्शन यहाँ पर देखने के लिए मिला। दोनों ही मुकाबले हम अगर देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबले, संघर्ष भरे मुकाबले, दोनों ही मुकाबलों में रोमांच देखने के लिए मिला और खिलाड़ियों का पूरा जोश देखने के लिए मिला। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। बैटिंग किसकी है? नाइट वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए बाउंस को। तो ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। फील्ड सजाई जा रही है। 8 ओवर का मुकाबला है। विकेट गिरने पर -5 है। ओवर के रूप में खिलाया जाता है। एक ओवर ब्रिज, पहले ओवर की पहली गेंद एक अनुभवी
आर्यन है फील्डर, दूसरे रन के लिए ओवर थ्रो हुआ और 2 रन दौड़ करके पूरे किए। मौका लाभ उठाया यहाँ पर जी नहीं, शायद आधा पहुंची उनके पैर में, थोड़ी सी दिक्कत जरूर देखने के लिए मिले। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार सामना कर गेंद, जो फील्ड लगाया है, फील्ड सजाई गई है। रिटायर्ड हट ओके। न्यू बैट्समैन प्लीज। खैर थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ था, फिर एक बार खेल शुरू होने की तैयारी में। पहला ओवर मैदान पर चल रहा है, 4 रन 3 गेंदें इस ओवर की हुई हैं अब तक। बल्लेबाज फिर एक बार तैयार, अविनाश। लेग से अंदर आती हुई गेंद, नो बॉल। अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा। अगली गेंद इस ओवर की, फुल टॉस बना करके ऑन साइड में खेला। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही। अंपायर की सहायता ली जा रही है रन आउट के लिए। हालांकि यहां से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है और सीधे थ्रो विकेटों पर जा गई लगी है, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से ये, जी हाँ। और इस तरह से ये रन आउट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। मनमय, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन मनमय द्वारा। गेंद पर चीता की तरह झपटे और सीधे दे थ्रो मारा विकेटों पर, और इस प्रकार से पहला विकेट गिरा। अविनाश आउट होकर के पहले में वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर, न्यू बैट्समैन इन। ओह बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच, फुल लेंथ डिलीवरी थी। साहिल आगे बढ़ करके खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का निचला किनारा लिया और बहुत ही उम्दा कैच मिड डाउन पर खड़े खिलाड़ी द्वारा। और इस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ऑन हैट्रिक गेंदबाज। जैसा कि मैंने कहा था गेंदबाजी करने के लिए जब गेंदबाज आए थे कि काफी अनुभवी गेंदबाज नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पर, अनुभव के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को फंसाया है। 2 विकेट लगातार 2 गेंदों पर। तीसरे बल्लेबाज मैदान पर, पवन। अनंत अच्छी गेंद थी, ये लेग ब्रेक गेंद थी, लेकिन अनंत ने बिल्कुल सफलतापूर्वक इस गेंद को खेला और हैट्रिक को टाला। यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी देखने के लिए मिली। -4। -4 पहले ओवर में 2 लगातार, एक रनआउट के रूप में और एक कैच के रूप में।
लिबास को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, बैक पेन। जी हाँ, अनंत थोड़ी सी कठिनाई में नजर आ रहे हैं, बैक पेन हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। किया जा रहा है। निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार, दूसरा लेकर निखिल तैयार, -4। अनंत तैयार, सामना करेंगे निखिल की आने वाली गेंद का। दूसरी ओवर की पहली गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से, 1 रन। इस बार ऑन साइड में खेला, बढ़िया शॉट है, 1 रन अनंत के खाते में आता हुआ, टीम के स्कोर को -2 पर लाने में सहायता करते हुए अनंत। शोर बदला निखिल ने यहाँ पर गेंदबाजी का, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज पवन के लिए। उन्होंने स्ट्राइक, सामना करेंगे फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। अब -1 पर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के खेला है, बाल बाल बचे यहाँ पर पवन। अगर गेंद विकेटों से टकराती तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था, और 1 रन इस बीच दौड़ करके पूरा किया। 0 for 2। अनंत सामना करेंगे, आने वाली गेंद का दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है। 8 ओवर का यह मुकाबला, EPL सीजन 4 2023। डॉट बॉल, इस बार ऑफ साइड में खेला, पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। जब तक ये गेंद को फील्ड गया था, पूरा मौका था बल्लेबाजों के पास इस 1 रन को बनाने का, और 1 रन अब जाकर के बोर्ड पर नजर आ रहा है। बढ़िया शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ की ओर दौड़ते हुए गए आर्यन, और गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की। 1 रन और यहाँ पर जुड़ता हुआ 2 रन। अनंत अब सामना करेंगे, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अब कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, काफी समय से माइनस में चल रहे थे। अब ओवर नंबर 2 समाप्ति है, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल कोरा सर आपको सुनाएंगे। Yes, sir. They have some batting to do here. Winning the toss and opting to bat first. The job is cut out here. Something in the region of 35 plus is an absolute must here if the batting team has to really take this match right down to the wire. Definitely in the driver's seat at this stage is the fielding team. Aditya winning the toss and opting to bowl first. They are in the driver's seat. One more man bites the dust here. One more. It's been referred into the third umpire's box. They're just checking the waist height. Full toss for that waist height. We'll have to wait and watch. In a very, very commanding position here, the team Nike Warriors winning the toss, opting to bowl first. Nike Warriors have their back up against the wall. They are in dire straits, looking down the barrel of the gun. And that is out. Is out. Once again getting into a negative scenario, minus scenario. This is the beauty of this format here at the EPL 2023. In the earlier match, in spite of winning the match hands down, if the batsman would have got out to the last ball, it would have been the end for the batting team. So that's the way this format goes. The new man in.
Nicely driven off to a confident start. He can really pack a punch. Abhishek, the captain, with the number 1 jersey that is into the declared zone. आक्रामक खेलना उनकी फितरत में ही है. अभिषेक. पवन. वाइड गेंद का इशारा, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ. कम से कम 35 रनों की जरूरत होगी बैटिंग टीम को. That's the bare minimum that they will want on the board. देखना है कि किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं कप्तान अभिषेक. He'll have to play a key role here. Nicely struck. That is the second exquisite sixer of the tournament. The first one was from the blade of Rahul Jha for Superstars. This one is from the captain. Abhishek is thanking the Lord out there. What a shot. अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए. He is a dynamic player. He really likes to lead from the front. He will let his bat do the talking, no doubt about it. Just what the doctor ordered with that 30 balls to come. 30 balls to come. एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई, एक अच्छी साझेदारी रंग लाती हुई पवन और अभिषेक के बीच. They need to make sure that there is no further loss of wickets at this stage. They need to stitch a partnership here. And जब अभिषेक इस तरह के फॉर्म में है, he really needs to be given the line. Yes, Pawan needs to keep the strike rotating. He's an accomplished player. Both these batters are quite experienced. And it's a timeout. Time. Yes, all set for this match to get underway. Once again, the scoreline at this stage is 12-3 at the end of 4 overs. 24 balls to come. And they will be looking to add at least another 30 plus on the board. This is a good contest here between bat and ball. This could really go right down to the wire. A good start for Nike Warriors, having won the toss, opting to driven downtown. $17 for 3. That is a key wicket. That is big fish in the net. बड़ी मछली जाल में फंसी. Pavilion catch लिया आर्यन ने. That is the wicket that they were looking forward to. That's the prized scalp. They will be happy to see the back of Abhishek. आत्महत्या की है. And yes, that is the new man who will take that walk back to the pavilion. He had to sacrifice his wicket. In a very commanding position here, and the Nike Warriors winning the toss, opting to bowl first. They are in a very good position here in defeat.
This is going to be a low scoring scenario, the EPL 2023. Straight back to the bowler. That's a no ball. छठा ओवर मैदान पर, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बीट करती हुई बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने के लिए मिल रही है आर्यन द्वारा। तीसरा ये 2 गेंदें डॉट कराई थी और तीसरे के लिए जबरदस्ती यहाँ पर यह रन चुराया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस प्रकार से 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति काफी खराब, नैया बिल्कुल भंवर में है और देखना है इस नैया को किस तरह से पार लगाया जाता है। कोशिश जारी है दोनों ही बल्लेबाजों की। आर्यन काफी अच्छी कामगिरी यहाँ पर दिखाते हुए, अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक आर्यन ने यहाँ पर किया है। फिर एक बार डॉट बॉल आता हुआ, छठा ओवर मैदान पर 9 रन केवल बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल का 1+1, जी हाँ नो बॉल। 11, 2 अंकों में 11 पर पहुंचा। फ्री हिट है और फ्री हिट का कोई लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल आता हुआ आर्यन की जानिब से। अच्छी गेंदबाजी आर्यन द्वारा देखने के लिए मिल रही है। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद इस ओवर की और इसे खेला है ऑफ साइड में 2 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति है 13 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 2 ओवर बची हैं और 12 गेंदों में मुझे लगता है कि अच्छे खासा स्कोर हो सकता है और अभी उनके पास एक मौका और है पावर ओवर का। पवन आगे बढ़कर के खेला, पवन ने बढ़िया शॉट है लेकिन अच्छी फील्डिंग। आर्यन एक बेहतरीन फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं, तैनात किए गए हैं और अच्छी फील्डिंग लगातार करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत कैच भी उन्होंने लपका था। तैयार गेंदबाज थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज मनोज। 14 रन 14 5 विकेटों के नुकसान पर। EPL सीजन 4 2023। यहाँ पर चकमा देती हुई गेंद विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई साफ बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज मनोज। -5। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी। एक कदम आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास किया, बल्ला ऊपर से घुमा और गेंद नीचे से जाकर के विकेटों से टकराई। इस प्रकार से मनोज का विकेट गिरा और अब हम स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर नजर आ रहा है 11 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर। बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंकी थी। कट जरूर किया था लेकिन रनों की कोई गुंज थी उसे समाप्त किया। पवन फिर एक बार तैयार, इस बार बढ़िया शॉट, बड़ा बैटिंग में पवन, फुल पावर के साथ ये खेला है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इन 6 रनों की बदौलत स्कोर डबल होता हुआ 12 रन आए हैं। बड़ा बैटिंग, इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे पवन। यहां पर बाल बाल बचे, भाग्य की देवी यहां पर मेहरबान पवन पर, बाल बाल बचे, यहां पर रन आउट हो सकते थे। 52 runs to win the match. That is the set target here for the team batting second. Yes, definitely not a mountain to climb, but the kind of format that has been employed in this, never know. There is a negative scenario, there is a penalty. So if they really start to bowl quite well in the initial overs, the match will be on, ladies and gentlemen, boys and girls. So do not go away, fasten your seat belts. We are into the last half of this evening, the last 8 overs.
And this could really go right down to the wire. You never know. सर देखिए बहुत ही बेहतरीन कैमरामैन ने हाफ वे यहाँ पर हुआ है इस मैच का, इस मुकाबले का। इस टूर्नामेंट के पहले मैच को जीता था टीम सुपरस्टार्स ने, दूसरे मैच को जीता कृष्णा वॉरियर्स ने। पहले मैच में शिकस्त हुई चार्जर्स, दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा मैवरिक्स को, और अब ये वाला मैच नाइक वॉरियर्स बनाम बाउंस। इस मैच को जीतने के लिए बाउंस को बनाने होंगे केवल, माफ कीजिएगा, नाइक वॉरियर्स ने 32 रन बनाने होंगे। स्वयं कप्तान अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। चलिए, सलामी जोड़ी के रूप में आदित्य और उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर (32 runs to win the match. It's the captain Abhishek to bowl. अपने टीम का हरफन मौला खिलाड़ी, बिल्कुल जिंदा दिल खिलाड़ी कप्तान अभिषेक. The captain bowling to his counterpart. 32 runs to win the match. Lights, camera, action, showtime. He gets his man to the very first delivery. What an interesting start here. What a turnaround of things here. Unexpectedly, the captain back in the hurt. Can team bounce back into the match with that wicket of Aditya? Very well bowled. Is making this a new ball talk here. नई गेंद के साथ शरारत कराते हुए. Shot game and he's out. If you hit the ball out of the box, Manmay back in the hut, the new man in. Jend. Abhishek on a hat trick. They'll have to be very decisive with their calling. It has to be a firm yes or a no. -8. So 40 to win now. Nicely driven, such a good looking shot.
Good nimble footwork. Played with a positive intent. That was played intentionally. That was well played. That goes crashing into the boundary ropes. Just what the doctor ordered. -3. Dead ball. That's a no ball. Right up there in the block hole. Off to a good start here. Good start to their defense of 31 runs. This is a dream start. What a catch! What a catch! The opening batsman, Bhupendra, back in the hut. Superb. This is scintillating cricket being played here by team Bounce. They have bounced back in the match big time. Do not go away. This match is on, ladies and gentlemen. This will go right down to the wire. They are in such a good position here now. Looking down the barrel of the gun is team Nike Warriors. ये मैच ने अजीब करवट. Good catch by Sahil, the youngish talent of Team Bounce. That should have been stopped. -6. Lots and lots will depend on Jayendra now. Can Jayendra be the knight in the shining armor? Can he save the day for the Nike Warriors? This is a terrific start here. Life absolutely miserable here for the batting team. No freebies on offer. They are making the batters toil hard for each and every run. -3. The scoreline is -3. That is now 35 to win. Because they are -3, 35 runs to win the match. 36 balls and 35 to win the match. Easier said than done. They have their back up against the wall. They are in dire straits, looking down the barrel of the gun. प्रतिकूल स्थिति में अभिषेक का स्पेल बरकरार. That should have been fired straight into the stumps. It required a direct hit. -2. Abhishek taking the fight to the enemy camp. वापसी का रास्ता खोजती हुई यहां पर टीम नाइक वॉरियर्स. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर मैच में बने रहना होगा. प्रीमेडिटेटेड शॉट. उस लूस गेंद को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए.
That should have been clobbered away. Yes, at last they get out of that negative scenario. Jayendra is looking to bail his team out of trouble. जब तक जयेंद्र का फील्डिंग टीम पर एक बड़ी उम्मीद की किरण है जयेंद्र के रूप में. तीन ओवर के बाद 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर. गेंद का 34 ओवर मैदान पर प्रगति पर है. बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश मगर अच्छी फील्डिंग, यहां पर कैच जरूर छूटा. अनंत डॉट बॉल. अनंत की अगली गेंद इस ओवर की. इस बार ऑन साइड में खेलने में सफलता प्राप्त की. आर्यन ने खाता खुला पहुंचाया -1 पर. चौबीस गेंदों में 32 रनों की दरकार, 32 रनों की जरूरत. रिक्वायर्ड 32 रन्स इन 24 बॉल्स. बाउंस वर्सेस नाइट वॉरियर्स के बीच मुकाबला चल रहा है. वॉरियर्स थोड़ी स्थिति जरूर, अभी भी 4 ओवर बचे हैं और 4 ओवर में 32 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए. तीसरा मुकाबला आज के दिन का मैदान पर चलता हुआ एक बेहतरीन आयोजन ऑर्गेनाइजिंग देखने के लिए मिल रहा है. 24 balls and 32 runs to win the match. We are into the final stage of the evening. The last match, match number 3. A total of 32 matches to come in this Exquisite Premier League 2023. This is season number 4. And this is indeed one of the best tournaments so far. A lot of detailing and planning has gone into the organization of this event. Off to a good start here, the EPL 2023. An interesting start. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजन किया गया है EPL का. EPL सीजन 4 2023. तीसरा मुकाबला आज के दिन का इस टूर्नामेंट का. आर्यन नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज अंकुर. क्यूर गेंदबाजी के लिए. स्ट्राइक पर अंकुर सामना करेंगे केऊर की आने वाली गेंद का. फील्ड सजाई जा रही है. EPL अगली गेंद 5वें ओवर की शुरुआत होने जाती. 5वें ओवर की पहली गेंद इस ओवर की. फुल टॉस बना करके खेला है ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में. 1 रन के लिए 1 रन. अब आर्यन सामना करेंगे. ऑन साइड में खेला आर्यन ने 1 रन के लिए. काफी अच्छी फील्डिंग लॉन्ग पर देखने के लिए मिल रही है साहिल द्वारा. इस बार बैकफुट पर जाकर के खेला है ऑफ साइड में 1 रन के लिए और दूसरे रन के लिए थोड़ा सा मिसफील्ड, थोड़ा सा फंबल और इसका फायदा उठाया यहाँ पर
और 2 रन दौड़ करके पूरे किए। और देखना यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा आता हुआ, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, पहला इधर और फिर उधर, ठीक है। थर्ड अंपायर की तरफ रिफर किया है, अंपायर ने देखना है ये रन आउट का चांस है या नहीं। जी नहीं, फर्स्ट तो क्लियर हो चुका है, फर्स्ट क्लियर हो चुका है, सेकंड देखना है अब। 2 रन कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे रन की जो ज़रूरत थी, तीसरे रन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर गेंद विकेट कीपर के हाथों में आती हुई, और जी हाँ, आर्यन यहाँ पर रन आउट नजर आते हुए। आर्यन सेकंड आफ्टर 2, हाँ तीसरे रन के लिए जो, जी हाँ 2 रन यहाँ पर खाते में जरूर जमा हुए। जी हाँ, हाँ थर्ड साड़ी। जी हाँ 2 रन आए हैं और तीसरे रन के लिए रन आउट हुए हैं। 4 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब -1 है, -1। हाँ 3 चेंडू झाले। -1, loss of 5 wicket in 5th over. अगली गेंद इस ओवर की, फुल टॉस बना करके स्वीप किया है, पैडल स्वीप 1 रन के लिए। अमित ने खाता खोला अपना, टीम के स्कोर को पहुंच, स्कोर है 18 गेंदों में अभी भी 30 रनों की दरकार है और 2 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज में बातचीत करते हुए, दूसरे को कुछ कान मंत्र देते हुए कि इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, जबकि ये सुपर ओवर है, निर्णायक ओवर इस मैच का, इस मुकाबले तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल से शुरुआत, अच्छी फील्डिंग अनंत की। इस बार ऑफ साइड में खेला, 1 रन प्राप्त किया अमित ने। 1+1, 4 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदों में 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सुपर ओवर होने के बावजूद बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 गेंदें लगातार डॉट कराई यहां पर बल्लेबाज को। तेरह गेंदों में 26 रनों की जरूरत। अमित सामना करेंगे। एक रन, 1+1। 12 गेंदों में 22 रनों की अभी भी दरकार। 12 गेंदें बची है आखिरी, और आगे का आंखों देखा हाल कोरा सरा। 12 balls and 22 runs to win the match. We are into the business end of this last match of the evening. Definitely a mountain to climb now. The last over, that was the super over, did not go for too many runs. And there is a run out. Abhishek joining the party. You cannot keep Abhishek away from the game. एक तरफ खुशी की लहर, दूसरी तरफ थोड़ी सी हताशा, थोड़ी सी मायूसी। एक लंबे अरसे तक ये इवेंट चलेगा। 7 राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेलने का अवसर प्राप्त होगा हर टीम को। उस लिहाज से काफी समय बाकी है कि आप इस इवेंट में कभी भी वापसी करें। You got to have an eye on the net run rate at all times.
Yes, this negative scenario in this format is making things interesting. The penalty, the negative scenario. Very rarely do we see a game of cricket loaded in favor of the bowlers. This is so refreshing. The bowlers have the upper hand here. It's been referred for that footnote into the third umpire's box. Yes, Abhishek has really marshaled his resources so nicely. That's a It's a fair delivery. That's the call from the third umpire. He's kept his thinking cap on at all times, Abhishek. Nicely driven. We'll have to wait and watch. Good bit of work. That is into the declared zone. 3 runs added. He makes amends. He makes amends. This was a more tough catch. He gets his man. The writing on the wall from this kind of a situation. There's only one team that can win this match, and that will have to be Bounce. The writing is on the wall. That catch was maybe the final nail in the coffin. उस विकेट के साथ वो आखिरी मोहर लगाई है बाउंस ने. .426. Nicely driven. One of the most senior players in this tournament. And that's been referred into the box. Yes, the first day of the EPL 2023 was quite an interesting one. The first day has really set the tone for the remainder of the event. We've had quite a few trial matches, practice matches, and now this is the business EPL 2023, a total of 7 league matches. And that is out. It's been issued the marching orders. The dreaded finger goes up. 3-25. 3-30 हो चुका है with that 3-30. 30 runs to win off the final 3 balls. They have scripted an extraordinary win here. This match has written its own story.